Hey, hi, good morning, Anju. Morning. Hello. Hello, can you hear me? Your voice is very low. I think something wrong with my laptop. नहीं आवाज तो नहीं आ रहा. Hello, can you hear me now? Yeah, a little bit better. Yeah, yeah, Anju. Morning. Okay. Good morning. Good morning. Okay, so I'm sure you have some doubts. Yeah, I have. Yeah, no problem. Let's start with that. I coded with for loop, but Uh-huh. some errors coming. Share your screen. Let's see. Okay. 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 So line number 11. Okay. You declared one variable. Okay. First of all, this is I believe this is not a for loop, right? No, for each loop. Okay, so but the screen that you have showed is not for loop. At line number Oh, 11, okay. um, you can see you have mentioned like plus I. Oh, Okay, okay. Okay. remove that comma before Oh, no plus. need of comma, right? Not required because it's a Okay. uh, just remove the comma and check if it's compiling now. Okay, let me check. No, that's sorry. I shared a wrong. Okay, but Okay, correct let this one me. as well. Yeah, this is for loop, like for each loop. This is that I cleared because No, I don't see the other program on my screen now. you can't see. Like, let me check. No. I see snip and sketch Okay, only. just hold, just. Hello. Yeah, I can see it now. Okay. Okay, so here you are saying for first of all that for f is in small. Okay. Oh, it's case sensitive. Yes, yes, because those are keywords. Okay. Okay, and your program is successfully compiled, I believe. Run it. Ah, That's the only I thing. was sitting for long for 1 hour. I'm not able to. And I wanted you guys to sit for 1 hour. That's why I'm not easily providing the solution as well. Reason is like you will remember this forever now. Yeah. That these are the case sensitive. Still program is not running, right? Let me check now. Yeah, Yeah, it's now running, it's but yes, this yes. program is not syntactically perfect for future use. After Okay, for that line, you need okay. to put curly bracket. So for Here, right? that System needs to out. be in curly bracket. Yes, yes, correct. That's the starting of curly bracket, and after that, okay, and press Control Shift F. Yes. Okay, so this looks now better. Fine. Okay, Okay, fine. so you are able to run, I think, this program as well. But now you will remember that Java is a case sensitive. Yeah, Okay. By the way, fine. I see like you have created proper classes method. Okay. I hope you are able to run those. Yeah, I Okay. still watch the still the two classes, so I'm not able to
continue with arrays and all. So That's that's fine. That's what fine. That's all fine. is Step my by step. pending. Two girls from our batch, they went through couple of recording 3 to 4 times. Just they were repeating those recording, Okay. and by that way they were able to solve their all technical syntactical problem. Okay, so Okay. it eventually it is going to happen. Only thing is you need to put time. So find some time, you need to put time. That's the only means I would say answer. Okay, so meanwhile Okay. I would move to anyone else who is Mahesh. Do you Okay. have any doubt, because you also joined after Anju? No, sir. Okay, then I remember Surbi joined. Surbi, do you have any doubt? Surbi Soni. No, sir. Okay. Anyone else having any other uh, doubt, issue? Guys, you got 5 days, okay, just to go through the content, assignment, and practice. I would say only practice is, that is the most important thing, I would say. Practice, practice, and practice. Okay. So, guys, anyone have any doubt? Because we will be starting by 8:30. And yeah, who is Yes, this? Anil sir, Vikrant here. Yeah, Vikrant. Go ahead. Yeah. So actually, I wanted to ask Mm-hmm. Vikrant. to got Yeah, please. yeah Yeah, go ahead, go ahead, go ahead. the optimum code to get that result, like the Which assignments. okay, okay. See, um, I saw your code, and that was absolutely fine. I will try to write one code, simple, straightforward. Okay, so when we say optimum, okay, so sometime um, this is a good word, I would say you have used, like how to write the optimum or best possible way to write the code. Okay, that's what like you wanted to see, right? Uh, yeah. So Okay. can I just share my screen and can you please Yeah, guide, because I yeah, yeah, have some sure. doubts. Yeah, sure. Is it visible? Yeah, I can see it. Yeah. So the very first was write an array program to check if specific values 5, 9 are present in this array. Mm-hmm. So like I used for loop here, Mm-hmm. and like if array I equal Okay, to so 5, you used two if. I would say why you can't go ahead and use only one if, and put and or condition as per the requirement. Why you need another 4 lines of code? okay, Okay, or operator or and operator, let depending upon the let me condition. note it, and Mhm. or operator. Yeah, Okay, that's something you can go ahead and use it, right? okay, I'll try. Yeah. And second doubt was like can't I use switch statement here? You can put case of those two number which you wanted to search, if that is found. But do you think switch statement is like more readable than the if else is more suitable, because just a two condition, and less number of code, less number of lines. More number of lines, more Mhm. maintenance in future. Better to Okay, write less number of code. There is one more point. um, Third way, array and another array to store those two element. Okay, two array, we can define two arrays. Like the first is a big array and small, there is a small array as well of two number. I think I saw in one of the assignment where somebody showed or shared those screenshot by validating the element by using two array. That is also fine. You can have the two array. One array will store the elements, that is 5 and 9, and one array will store the list of all the element, and you Mhm. can put the two for loop. That's fine. Okay, Okay, and performance wise, I wanted to tell, like you used optimized like code. Okay, what I would say, less number of lines of code is something which is good.
and that will remain optimized code. That's one of the like generic thumb rule. Okay. The second point is, don't worry about at this moment, don't worry about optimization. Just think about what are the different options that I have to complete this code. The reason, let me tell you the reason. Java works in nano or microsecond. Okay, so if you run that particular program, even if 1,000 lines of code, that is getting executed maybe 0.00001 second. Okay, so don't worry about optimization, or you want a high performance. Don't worry about that. Even what I have observed, the developer is writing the code in the company. They are simply using for loop, if else, switch statements as it is. There is nothing like a major. The performance optimization generally happen with the queries which is actually being used to fetch the data from DB. So I would say as long as you are getting the expected output, Mhm. I'm absolutely fine. Okay, okay. And Mhm. for this, uh, actually, I tried using Switch, Okay. but the problem I was facing, like, uh, uh, what was that? No, Yeah. no, no. So, Okay. Yeah, yeah. Good. So, uh, whenever like the case was matching, the switch is like the loop was breaking, but correct. it wasn't stopping until this for loop is Not getting recommended executed then. to. Switch statement is not suitable for this assignment then, right? Because Okay. uh, it is something like generally when we should use switch statement when we have uh, a, a single condition that needs to be executed out of multiple cases, and currently we already have two cases like 5 or 9. So generally it is not recommended to use with the switch. You can achieve the same result. Mhm. Okay, I would say you can achieve the same result by adding one more array here. That array will hold only two value, 5 and 9. That will be your outer loop of for, and then you can put that for loop. And once your first case will match like 5, um, other cases will not be executed. That for loop will again move and again will try to search for the 9. So here in right side program you need two for loop if you want to use switch statement, but that is not recommended Mhm. because that will add more number of lines, more number of code. Yeah. Okay. So you said the first value for from 5 and 5 9 or. needs to be present in another array, and that array needs to be used as a part of length in line number 12. The value will be 2, less than 2. Mhm. Correct. New array with 5 and 9 value, and that's length needs to be used, not this one, Okay, because got you that. want to search two element. So your for loop should iterate only 2 times. Mhm. Okay. Anything else? Okay, right. This is again same like you use or condition. This is almost same type of code. Only thing was string. Okay. Addition. Okay. Subtraction. No, not this is not the best way. Okay. Addition, subtraction. We'll go through this code. Maybe I will try to create the code as well. Okay, that's fine. Your syntactically code is absolutely fine, and the most important part is you tried. Okay, so you Okay. understood many concept, and I'm happy with that. I'm saying like even if code is not working, that's fine. You Mhm. tried, and you almost tried all the assignment. Yes. Okay, yeah. Uh, Thanks, Vikrant. Guys, Thanks. anyone else? All good. Okay, so let's wait another 2-3 minutes and then we'll start with the actual session because 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 only. We are missing with 7 candidate. Out of that, Rajat is not going to join. So 6, we need to wait for 6. Our batch strength is 17.
I hope everybody is having access to the Radical portal. Okay, so silence. I assume everybody is having access. Yeah. Chat. Okay. I'm going to schedule this call for 8. So 8 to 8:30. Doubt issue discussion, and 8:30 will continue with the actual session. So I'm just okay. 8:31. Okay. Okay. Let's wait for another couple of minutes. Okay. I'm just muting my audio. So I have a question. Audible. Hello. Can anyone hear me? Yeah, Prasad. Uh, Hi, Anil sir. I mean, are you there? Prasad, maybe Anil sir is away. Yeah. Okay. Yeah. Got it. Thank you. Hey, good morning, everyone. Okay, so okay, 1, 2, 3, 9. Okay, so hey, hi Jayesh. Um, so I hope you went through the recordings of the Yes, session. Yeah, okay, so you have at least basic background. Do you have Java setup on your machine? yes. Okay, perfect then. Okay, so actually maybe after this class we can separately connect just to make sure that you are in line with the batch. Whatever the things like basic thing that we have covered so far, I will try to like check if like how good you are in Java and what are the different things that you need to do so that you will move along with this batch. Okay, so we'll connect and we'll try to share all the code details as well. Fine. Yes. Oh yeah, thanks Jesh. By the way Jesh, what's your background? When I say background, like maybe education, and if you are working, maybe your experience. Yes. Mhm. I have completed computer science, BE computer science, and I have four years of experience in manual testing. Okay, perfect. Okay, fine. Yeah, that's fine. Like we have many
such a candidate in this batch itself. Okay, Yes. so yeah, thanks, Jayesh. Let Thank me share my screen. Let's get started. So, share screen, entire screen, sharing my entire screen. Okay, so guys, what we were trying to do, we were trying to understand basics of Java. For that, in last session, we saw. Let me open that as well. In basics, we saw basics of class and object, then basics of method, then arrays, okay, and variables, local and instance variable. So this part we saw. This part is still pending because I have not explained these things in detail, though it's a very basic thing, but I have not explained these things because technically we can't go ahead with this understanding till we learn the constructor part. So I'm just waiting, like once we do learn the basics of constructor, we'll visit this slide again and try to complete this code. Then this is something, okay, um, which we saw last time. See guys, last session, that is Sunday session, we completed only 3 lines on this slide. Can you imagine how many slides we have? 29. So I am expecting you are comfortable at least writing the correct syntax or syntactically correct code. Okay, so that's why you need to do the practice, and there is no alternative. If you are expecting that things will happen automatically, even if, because Anil is putting all the efforts, that is not going to happen. You have to put your 100%. Even if I put 200, 300, 400%, you have to put like your 100%, because in interview you have to write the same code on paper. Generally interviewer asks you to write on paper, and that's what like challenges, like he can easily guess like how comfortable you are in writing the code. So let's make a habit to write the code, that too multiple times, so that you won't be blocked in the actual interview. Okay, so what is this importing package? Okay, this concept we already used. Okay, what when we say importing the package, but I will show you, like while discussing the access specifier, I will show you like what is the meaning of importing package. Importing package is just like using the references. Okay, when I say references, that is like your surname is your reference. Okay, something like that is also happening in Java. So our next goal, or this is where we are going to start. To be honest, for freshers, generally this will remain your, or this is mostly your first question in the interview for freshers. Okay, and there is one more concept of static variable. What is static variable? These two Java concept will be asked as a first interview question. Nobody is going to ask you about what is JDK, what is JRE. Why? Because this generation has been moved from those basic questions. They want to move to the next level of technical question. Even the similar things will happen with the Selenium. You will, even if you are going for the Selenium interview or automation interview, the Selenium part will remain small. API automation, integration, that part will remain having the high weightage in terms of interview. Okay, the similar way, this is something which you can expect in the interview. Access specifier, I remember this public word which we have used in all the program. Okay, so this array or basics of method, you can see this public word, this public word, this public word we already have used. Okay, why that was required? To write the basic code which is syntactically correct. Public. Okay, so what we are talking about,
access specifier. Obviously, access word suggests that there is something which have some restriction to use. Okay, why those restrictions are required in Java? We'll come to that point. Access specifiers. So what are the different types of access specifier? Public, private, protected, and default. Just spend a minute to read this, then I will read, and then let's discuss and then code. Okay, so let's spend a minute to read this slide. Okay. Okay. Let's try to understand this concept. Public. The public access modifier is accessible everywhere. Okay, very interesting statement. Everywhere. Matlab, you are creating a variable or method which is public on your machine, and can I access that? Can I access that? Obviously no, because those variables or those methods are written in your project on your machine. How I can access in my code? Absolutely not possible. Then what is the meaning of this everywhere? The meaning of everywhere is in your project. When I say your project, this is my Radical Java is my project, and I can access those variable or method inside that project. Obviously we are writing all the code inside the src folder, so logically you would be able to access those variable. मीन्स फिर से रिपीट करता एकदम आराम से, अगर आपने बेसिक्स में कुछ क्लास बनाया, ओके, और उस क्लास में ये कोड लिखा, then you will be able to access that code in the control flows as well. Okay, you will be able to access that method inside the practice one as well. Okay, अनिल नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, देखते हैं, अपन करेंगे, कोड लिखेंगे फिर कि एक्सेस कैसे करेंगे. अपन ने ऑलरेडी एक क्लास से दूसरे क्लास में एक्सेस किया है. यू रिमेम्बर वी क्रिएटेड दैट टेस्ट मेथड. ओके, सो लेट मी शो यू. आपने लिखा था, ये देखो, ये टेस्ट मेथड जिसमें मेन मेथड था, वी आर एबल टू एक्सेस दिस आई फ्रॉम दिस क्लास. ये 200 अपन ने एक्सेस किया था, याद है? इसमें टेस्ट नाम ही उसके लिए दिए थे अपन ने, टेस्ट विल होल्ड द मेन मेथड. ये मेन मेथड टेस्ट में. Okay, and this we created an object and we access through object elements of this class. Okay, but we did in the same package. मतलब मैं एक ही पैकेज में था, वो पैकेज का नाम था मेरा बेसिक. Now here this public access specifier is saying everywhere. तो फिर ये बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि बनाओ वेरिएबल या मेथड पब्लिक that will be accessible in your entire project. Anyone can use that code. Okay, now private. The private access modifier is accessible only within class. अपने को class तो सीख गए, right? We learned the class concept. What is the class? Class is like your home having multiple rooms. If you remember that example, you can access those things within that home, and that is something called as private. Okay, so if you write any method, if you write any variable which is private, that will be accessible within the class. Yes, now things looking better. We can differentiate between public and private. Let's go with the protected. Okay, let's go with the protected. So the protected access modifier is accessible within the package and outside of the package, but through inheritance. Do we know inheritance? No. Okay, so because see, this is like all the concepts of Java actually interlinked.
If I want to understand protected, I should have an idea about the inheritance as well. But we will today, what we will do, we will go with this line, and about the inheritance. Okay, we'll again visit the same code once we learn the inheritance. This is how we need to do. Okay, because those are interlinked. Let's go with the next. Default modifier is accessible within the package. Okay, so ये दोनों similar दिख रहे हैं थोड़ा बहुत. Only thing is protected is having additional feature to go outside of package. Sorry, but through inheritance. Okay, so now we can differentiate those things when these things will be used. Obviously, when you don't want to it, not don't want you don't want to access your code by someone else, or okay, you're putting some restriction so that wrong people or even your colleagues won't use the wrong code to get the same things done. Okay, so that's what the logic. We will maybe talk about this in detail, but prior to that, let's try to understand what is this public, private, and protected and default. Okay, so guys, obviously we need to code. That's what the rule is, thumb rule is. So मैं क्या करता, ये देखो मैंने, okay, so there is one more thing which I wanted to show. This is the package view which is available to everybody. Okay, this is package view. Okay, so these are my all packages like basic, oops, concept. If you are not comfortable with this package, okay, so इसमें क्या होता है, ये देखो इसको भी समझने का ट्राई करते हैं. ये क्लिप्स है बट समझने का ट्राई करते हैं. एक्सेस स्पेसिफायर्स नाम का एक पैकेज है, वो एसआरसी में है. उसके अंदर ए नाम का एक पैकेज है. ओके, डॉट लिखा है. एक्सेस स्पेसिफायर में और एक पैकेज है बी, और एक्सेस स्पेसिफायर में और एक पैकेज है सी. इट मींस दैट एक्सेस स्पेसिफायर इज अ पेरेंट पैकेज हैविंग 3 चाइल्ड पैकेज फोल्डर इन हायरार्की है. Now the thing is, this project explorer is also have the similar type of view. ये व्यू कहाँ से लाया मैं वो भी बताता आपको. ये क्यों, अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए बता रहा हूँ, इसका कोड से कुछ लेना देना नहीं. नाउ नेविगेटर में सेम कोड ओपन कर रहा हूं मैं, सिर्फ यहाँ ये देखो ये कैसे दिख रहा है. सो विच व्यू डू यू लाइक, मैं वही यूज करता. फिर पैकेज करना है या नेविगेटर करना है, आपको दोनों व्यू कंफर्टेबल हो, यू कैन यूज एनीवन. बट पैकेज नेविगेटर डेप्रिकेट हो चुका है, बट इट इज वेरी इजी टू रीड द कोड कि ए में क्या है, बी में क्या है, कौन किसका पैकेज है. सो एनी रिकमेंडेशन, एनीवन वांट नेविगेटर? महेश, गो अहेड विद द नेविगेटर. आई विल ट्राई टू यूज द नेविगेटर. देन व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, इनेबल कैसे करना है नेविगेटर? नेविगेटर को इनेबल भी करना पड़ेगा, राइट? नेविगेटर अच्छा लग रहा है, राइट? ऑब्वियसली नेविगेटर रीडेबल है, बट द थिंग इज एज पर जावा यहाँ अपने को पैकेज का पाथ ढूंढना पड़ता है. ए पैकेज का पाथ क्या है? src.accessspecifiers.a which used in current market. Okay, it's all depends. Nobody care as long as you are writing the correct code. It's all about the individual choice. Okay, so whatever you feel comfortable, because it has nothing to do with any coding standard. Okay, it's just a view where you can see the things differently. Okay, so Archana, go ahead with the package, no problem. I will use both. If you want to enable navigator view, go to the Windows, show view. If you see navigator over here, select it. If not, click on other. If not, click on others. Okay, अदर में क्या है, ये जनरल में जाओगे ना तो यहाँ नेविगेटर मिल जाएगा. अदर में नेविगेटर मिल जाएगा, ओपन कर दो, यहाँ एक नेविगेटर ऐड हो जाएगा व्यू, एंड यू कैन यूज दैट व्यू टू नेविगेट थ्रू योर प्रोजेक्ट. ऑल गुड? चलो नेविगेटर ऐड, या तो मुझे बता भी दो once you are done with the adding a navigator to your view. Do let me know. फिर से रिपीट करता. Let me repeat. Windows, it's optional.
दोनों भी व्यू रह सकते, तीनों भी व्यू रह सकते, मैं तो तीनों भी रखने वाला हूँ. ओके, विंडोज, शो व्यू. If you see navigator over here, that's fine. If not, click on other and add the navigator, so that you can write the systematic code and it's just the view. Now, it is not going to play any role in execution. Okay, shall I move? Anyone pending with this? Any help? Oh, is it, hello, is it navigation? Navigator. It's Okay, click on other if you don't see that. in Windows only? Windows, show view, Show view, other, last one, other, okay. and then general, and then navigator. Okay, Got it? yes. Okay, so maybe you can now this view will be enabled and you will see the things little bit in different way, and I'm going to use navigator because it's more readable. Okay, fine, because I want you to understand like what I'm doing, and it's easy for you to read what I'm going to do. So today we wanted to learn the access specifier. So what I'm going to do, I'm going to create one package folder, same actually. Okay, so I'm creating access. Wait, do not type anything. Access Spires batch 24. Okay, this is our batch 24. I've just created batch 24. This existing package, I don't want to use it so that you won't have any confusion. I think somebody pinged me something. No, in chat channel. No. Okay. Inside this, I will create. See, access specified b24.a. See, guys, what I'm doing. Why? Because I want to understand that concept. I don't want to use the existing folder. If after 1 month I want to learn the access specifier or revise the access specifier concept, I just open this folder. I will open the classes present inside this folder, and I am done. I am ready for interview. Okay, so this is what I'm doing. You need to put dot and package B. So you can see I'm putting dot and package A, B, and C. Why 3 packages? Because I want to learn concept by creating some sample code in these 3 different packages. Okay, so I created this package first inside SRC. You know how to create the package. Let me repeat that. Right click, new package, and you create the access specifier 24. Then in access specifier B24, again the same package, but you this time you need to put dot. This time you need to put the dot so that package will be created inside this folder. Don't delete this, otherwise this will, but your package will be created at SRC level. Clear? Any doubt? No? Okay, let's try to understand my public concept. Okay, let's try to understand my public concept, which we just seen on the screen. Let me create. Okay, so again, anybody pinged me? Why I'm getting no? Okay, I think I'm getting a couple of alerts that I thought like somebody pinged me. Anyway, let's try to understand this public, very basic thing. I want to create one sample class. Okay, I will create my public. Okay, public private. Sorry, public private. Okay, AC access specifier. Okay, my public private access specifier, and I'm not creating the main method because we decided when we will create the main method when we want to create an object of some other class, and I'm actually creating first some other class, so we'll not create at this moment. We'll not create it. Let's have the simple method which we use to create public void method 1. Done. Says sys out
double quotes in method 1. Okay, ठीक है, एकदम simple method लिखें. Yeah, this we have already written. Okay, so everybody know this. Now, then what I am going to do, what different things I am going to do with this method 2? I am going to make this private. Can you see this now? Can you see this now? I did a very simple change. Instead of public, I made this method as a private. Okay. Now let's see what happens with this two method. Okay, with this two method, when we try to access those methods inside the same class. Okay, I'm creating a, okay, let me copy this name first because I'm going to create the test. Okay, I want to test my concept of Java. For that, I am going to create main method. This is main method. Finish. What I am going to do, I'm going to use the same concept that we studied. Bj. Okay, obj is equal to new. ठीक है, ये क्या किया मैंने? Obviously ये class बना है, इसमें दो method है. Okay, this is the basics of method. Same code. Only thing is I created a method with private keyword. Okay, let's do one more thing. Public int I is equal to 10. Okay, private int. Let's have this as well. Two more variable I added. One is public and private. Obviously concept will be applicable for both in the same way. Okay, so I created an object. Let's see what are the different things accessible to me. Obj dot. Okay, so you can see the list of method or variable which I can access from that class. Please observe carefully what you are able to access. Take a minute. Okay, you are able to access this I variable. You are able to access this method 1, but you are not able to access J variable and method 2. Okay, let me save it. You can see this. This is private. Method 2 and this J is not accessible in this class. Clear? Any doubt so far? Very simple thing which I explained with this very simple way as well. Any doubt? I'm just opening my chat channel to see if clear. Okay, मैं उसको okay. When I say accessible, मैं उसको print भी कर देता है. रुको. नया तरीका एक और डायरेक्टली प्रिंट करते हैं. sys out value of I is equal to plus obj dot I. ठीक है, डायरेक्ट प्रिंट कर दी. और दूसरे वेरिएबल में रखो, उसको प्रिंट करो, उससे बेटर दूसरा है obj dot method 1. Done. Clear na? Okay, let me run this then. Okay, run. Guys, we have done the same thing. Why you need to declare variable as a public? उसका आंसर नहीं दिया मैंने अभी तक, because that's a practical case. Practical case live scenario में आएगा तो उसके बारे में मैं बात करता. पहले जस्ट कंसेप्ट समझ लिया मैंने कि प्राइवेट में क्या होता है एंड पब्लिक में क्या होता है. Okay, so far clear with at least what is happening with the private and what is happening with the public. Okay, now let me tell you the practical example. Since Sanju asked me this question, let me share file new. Okay, don't say. Okay, consider I have a team. Okay, I have a team and they are working on automation for our application. Okay, I have a 6-member team. Okay, 6-member team, and 2 guys are working on
two guys working on UPI payment. You know UPI payment, right? अपन UPI payment कर रहे हैं ना. In one of the bank there is a one module which is being used for transferring the money through UPI. Two members are working on NEFT and EFT. Do you know this NEFT, right? Okay, and two members are working on automating the application having this RTGS भी एक होता है, right? Okay, so मेरे दो लोग है ना UPI पेमेंट का जो मॉड्यूल है उसको ऑटोमेट कर रहे हैं. मे बी दे आर ऑटोमेटिंग, they are automating 100 test cases. Try to understand, these are automating 150 test cases, these guys are automating 200 test cases. Clear? या ऐसा सिनारियो मेरे टीम में. Now the thing is UPI में एक मेथड है. ओके, और UPI मॉड्यूल ये UPI का उन्होंने एक फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया. कैसे बताया यार? ओके, एक फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया कि SRC इसके अंदर, ओके, इसके अंदर कुछ टाइप नहीं हो रहा. ओके, व्हाट हैपेंड? आई एम नॉट एबल टू टाइप. ओके, फिर से करता. ASRC का एक फोल्डर है. प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ. ओके, SRC के अंदर इन्होंने UPI का कोड है. ओके, सिस्टमैटिक करते थोड़ा. UPI का यहाँ ऑटोमेशन कोड लिखा है, राइट? ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं थोड़ा रिलेट, आप थोड़ा भी रिलेट कर पाए ना तो भी सही है. NEFT का कोड है. ओके, फॉर एग्जांपल अंजू काम कर रही है UPI पे, प्रद्युम काम कर रहे हैं NEFT पे, और लाइक राधिका काम कर रही है RTGS पे, पेमेंट पे. ओके, नाउ यहाँ भी क्या होता है? यहाँ भी फंड ट्रांसफर होता है, राइट? यहाँ भी फंड ट्रांसफर होता है, बराबर. फंड ट्रांसफर ही होता है ना यहाँ भी. तो अंजू ने एक मेथड लिखी फंड ट्रांसफर की. ओके, ये मेथड लिखी फंड ट्रांसफर की. ऑटोमेशन, ऑब्वियसली ऑटोमेशन की मेथड रहेगी ये, राइट? क्योंकि अपन ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेशन का फंड ट्रांसफर का एक कोई तो मेथड लिखा. तो प्रद्युम्न ने भी बोला मुझे भी फंड ही ट्रांसफर करना है. मैंने भी लिखा एक मेथड. ओके, राधिका ने बोला राधिका भी फंड ट्रांसफर ही करे. RTGS भी फंड ट्रांसफर रही है. ओनली थिंग इज विल हैव द डिफरेंट पैरामीटर. उसका भी कोड है, उसमें भी फंड ट्रांसफर है. ओके, नाउ दिस अंजू वांट कि उसका फंड ट्रांसफर कोड एक्सीडेंटली प्रद्युम या राधिका यूज ना कर ले. ओके, सो व्हाट शी कैन डू, शी कैन अवॉइड मेकिंग दैट कोड एज अ पब्लिक. उससे क्या होगा सर? अगर इफ एनीबडी वांट्स टू एक्सेस दैट क्लास, that person won't be access that code. उसको क्या करना पड़ेगा? उस मेथड को, अगर इस मेथड को प्राइवेट बना दिया, ओके, इस मेथड को प्राइवेट बना दिया, if प्रद्युम्न from this code or Radhika from this code want to access Anju's method, what needs to be done? What needs to be done in the code? Any guess? उसने प्राइवेट कर दिया है, यानी इनको एक्सेस करना है. क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिकली सोचो. हाँ, पब्लिक करना पड़ेगा, राइट? ओके, एवरीबडी एग्री विद दिस? पब्लिक करना पड़ेगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. एकदम सिंपल यूज केस बता रहा हूँ. ओके, ठीक है. ये 6 लोग हैं और 6 लोग मुझे रिपोर्ट कर रहे हैं. हाँ, याद रखना है चीज. नाउ सपोज, ओके, प्रद्युम बोला यार क्यों कोड लिखते हैं, अपना खुद का कोड क्यों लिखते हैं? मैं ना अंजू का ही कोड यूज करता फंड ट्रांसफर का. मुझे बताओ, उसने यूपीआई के हिसाब से कोड लिखा है. यूपीआई में भी ईमेल आईडी लगता है, एनईएफटी में ईमेल आईडी लगता है क्या? नहीं. तो इट इज एज गुड, मतलब फंड ट्रांसफर दोनों कर रहे हैं, बट दोनों का बिहेवियर अलग है. ओके, आइसक्रीम मल्टीपल ब्रांड के होते हैं, उनका टेस्ट अलग होता है. सिमिलरली फंड ट्रांसफर के मेथड या उसमें कोड अलग अलग लिखा है, क्योंकि इन्होंने इनके क्लास में लिखा है, इन्होंने इनके क्लास में लिखा है. बट समहाउ प्रद्युम वांटेड टू रीयूज द कोड. उसको लगा कर लेते हैं, एक्सीडेंटली
और इंटेंशनली. ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक्सीडेंटली मतलब गलती से उसने वो कॉल किया, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और वो मेथड यूज कर ली, ये हो गया एक्सीडेंटली. और इंटेंशनली मतलब यार छोड़ो यार, कौन लिखता है, आलसी प्रद्युम्न. और प्रद्युम्न ने डिसाइड किया अंजू का कोड यूज करते हैं. गेटिंग? नाउ द थिंग इज व्हाट विल हैपन. ओके, पहले तो वो प्राइवेट है तो एक्सेस नहीं हो पाएगा. तो प्रद्युम्न ने क्या किया, ऑब्वियसली कोड सबको एक्सेसिबल है क्योंकि तुम लोग सब एक टीम में है. ओके, प्रद्युम्न ने क्या किया, उसको पब्लिक किया. ओके, और उसका कोड उसको उसने यूज किया पब्लिक कोड, अंजू का कोड अपडेट कर दिया, यूज किया, और उसका ऑटोमेशन रन हो रहा है, बट उसके मशीन पे हो रहा है, राइट? उसके मशीन पे रन हो रहा है. नाउ ही हैज टू यूज द गिट लैब और गिट और version control system. I'm not sure you guys know the version control system. Control system is something where we put our code. I'm enabling my video if you can relate the thing. Okay, so now, okay, video में मैं दिख नहीं रहा होगा, मैं ऑन ही नहीं किया था शायद. Now let's try to understand. अगर प्रद्युम्न ने उसका कोड पब्लिक कर दिया है, अंजू को पता भी नहीं है, नाउ ही इज यूजिंग इट, उसको लगा कि यार इसमें ईमेल आईडी यूज हुआ है, मुझे मेरा तो दूसरा है फंक्शनैलिटी, उसने अंजू का कोड भी मॉडिफाई कर दिया, राइट? वो कर सकता है आज प्रद्युम्न, क्योंकि उसके पास कोड का एक्सेस है. नाउ द थिंग इज दैट कोड विल प्रेजेंट only on his machine. Now what he has to do, he has to send that code for review so that वो सबको अवेलेबल हो जाए. Okay, and the thing is that won't happen. क्यों? क्योंकि उसका रिव्यूअर मैं हूं. मेरे पास वो रिक्वेस्ट आएगी कि प्लीज रिव्यू प्रद्युम्न कोड. द मोमेंट इट कम टू मी, आई विल से अरे प्रद्युम्न तू अंजू का कोड क्यों यूज कर रहा है, वो तो यूपीआई मॉडल का है. तो प्रद्युम्न ट्राई टू convince me saying that it's almost the same code. I said no, this is not the same code because this is being handled with the mobile number and email, and for this you need IFSC code and account number. So these are the two different code. प्रद्युम्न ने मुझे एक क्वेश्चन किया, अनिल क्या होता है, कोड यूज कर लिया है मैंने, मेरा कोड तो चल रहा है, बट यू नो व्हाट यू डिड, you made sure that all the automation script created by Anju are failing now, and you are making sure that your scripts are passing now. मतलब दूसरे के scripts fail किए और खुद के script pass किए. Getting? Everybody understood what I am trying to say? How will you know he has changed her code? Because that is something review request आएगा मुझे. You cannot change the code in central repository. You can only change in local machine. Central repository, that is called as Git. Okay, Git. और Git में मिनिमम एक रिव्यूअर चाहिए होता है, और वो रिव्यूअर मैं हूँ एज ए लीड. तो मैंने बोला ये दिस कोड इज नॉट अलाउड एंड आई विल रेस्ट्रिक्ट हिम बिकॉज यू आर राइटिंग अ रॉन्ग कोड. अगर मैं भी प्रद्युम्न के साथ मिला हूँ क्योंकि हम दोनों दोस्त थे, मैं बोलूंगा चलो अंजू का देख लेंगे, अंजू फिर से नई मेथड लिख लेगी. ओके, दैट इज पॉसिबल, बट to be honest, to be as a part of integrity in the company, I will not allow that code because I am a lead of that group and my 100 scripts are failing and I am making sure that my 150 scripts are passing. I want 250 scripts passing. That's why I will make sure that I will follow this approach of this approach of making that method private, and that will be used by only Anju's code. Clear? I tried to explain the things with the practical scenario, and the same will be applicable for variable as well. ठीक है, समझ लो. अभी ये तो अभी अपन प्रैक्टिकली वो ऑटोमेशन में इंप्लीमेंट भी करेंगे, बट अभी अपन तो जावा सीख रहे हैं. बट मुझे क्वेश्चन आया था, हाउ विल यू नो, नहीं कहीं किसने तो मुझे क्वेश्चन पूछा था, व्हाई नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल एज ए पब्लिक और प्राइवेट, एंड उसका आंसर ये, एंड द सेम विल बी एप्लीकेबल फॉर वेरिएबल. If a variable that I don't want to use outside the class, then I will make it private. ठीक है? Okay, so ये हो गया मेरा. Okay, I'm moving to the code. So okay, so anybody is saying something? Yeah, I mean, one question. Why would Anju's code will start to fail? I mean, Why do? Anju ka code, why it will start to fail when it was passing previously? Okay, because Pradyum changed the method implementation, method code inside that. He adopted the existing code to work as per his behavior of NEFT.
Okay, but he updated methods of his, module. He did not update No. He Anju's updated module. Anju's module because he wanted to use this method. He didn't created this method itself. He decided not to create this method. He decided he won't create this method, his own method, and he will try to use Anju's method. He thought like since the fund transfer name is same and I have access to that method, I can go ahead and access that method. Okay. Okay. So if I'm Mhm. Pradyum, then ideally I should not be. If Code is how accessible, no? yeah. Okay. Code was accessible. Code was accessible. Accidentally he used or intentionally he used. So even accidentally that is not going to happen when Anju is going to make this method as a private. Yeah. Okay. So Yeah. this is just a restriction. I told you like we can bypass all these rules, Java and everything. How? Because if I am going to approve Pradyum's code, okay, so where is Java? Okay, so that needs to be monitored by at least someone that Java is effectively being used by all the engineers. Yeah. Makes Yeah. sense. Makes sense. Okay. Okay. So that was about public private. Okay. Okay. So this is like I am able to access method one, which was public. I'm not able to access method two obj dot method two तो access ही नहीं हो रहा है. Okay. Type करोगे तो भी error आ जाएगा. Okay. Now the thing is, let's go inside this class and try to access this private method within the class. Logically, we decided not to create the main method when there is a no test word. But अभी करते हैं क्यों? ये उसके बिना टेस्ट नहीं कर पाएंगे. Public void main क्या है? Okay, मैं एक main method इसमें create कर रहा हूँ so that I can demonstrate the private word, that private string square bracket curly bracket. Obviously मुझे access करना है तो क्या करना पड़ेगा? Logically मुझे object बनाना चाहिए. ये मैं टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ बस. एक्चुअली अपन मेन मेथड नहीं बनाते जनरली. मेन मेथड कई दूसरे क्लास में ही होती है. बट सिंस वी हैव टू राइट minimal code to demonstrate the thing, obj ac dot. Can you see I variable, and this is a symbol if it's a public, and the public is this is green circle with dot, and the second is j. This is in red with the cross. The meaning of this red icon is this is provided by Eclipse. Eclipse giving you the suggestion that you are trying to access a private variable, you are trying to access a public variable, or this variable is declared as a public, this is private, and the same applicable for this. Method is in green dot means it's a public method. Method is red and square, this means it's a private method. But the thing is, this is what I wanted to do. Public to मैं access कर ही पा रहा था. Sys out. Okay. I'm just printing the variable. Okay. I print kiya. Let's see if I'm able to access the J as well. Control C, Control V, J. Access कर पा रहा हूँ, देखा? And obj ac dot method 1 and obj ac dot method 2. Okay, so this is how. Okay, so okay, I'm not able to public static word missing. It is mandatory. Java application. Can you see now? I'm able to access variables. So this is Anju's code. Anju said I created the fund transfer method and that is private. Now even if Pradyum is sitting in the package B of NEFT transfer, if you write the code, he won't be able to access that method. Okay, that's what like I was saying. But if she has done a public method, accidentally, even if he is able to access and he is using that method, which is not a good practice.
both are mature enough to understand, like, I should not use Anju's code because it is having a different implementation or different code. That's fine. Nobody's um, uh, like going to say that this is the wrong code. You are making all the method public. That's fine, because you have maturity. They understand which code needs to be used, which code need not to be used. Okay, that will happen only when you have a proper understanding about Java. But sometime accidentally this can happen, and that restriction, so make sure that you write the systematic and proper code. Okay, that's why we have this public private concept. Any doubt over here? We are able to access. You can see. Let me close all this basics of method. Okay, so I will just keep only these two classes. Then we'll slowly move in terms of protected and default variable. All clear so far? All clear so far? Okay, can we write the code? उसके बाद अपन पैकेज बी में भी जाएंगे और पैकेज सी में भी जाएंगे. Give me some time. पैकेज बी बनाए तो है ना, तो उसमें भी जाएंगे. Okay, so please write this code. I will make sure that this code is shared on two screens so that you can write the code. Okay, chalo. Let's complete the code. So one question, Mhm. Prasad here. So No. if I go to that package or folder A, then I do not get an option of creating a class. This one? No. This you should new class. You don't Yeah. see option class over here. Correct. No. Okay, go click on other. And then Okay. in Java, you will see that option class. And once selected, it will available from next time in that list. Yeah. Okay. You got it. Yeah. Makes sense. This is Jayesh, right? Prasad. Sorry? Prasad. Prasad. Okay. Yeah. Prasad. Yeah. Okay, Prasad. Yep. I'm still not able to recognize the voice. Okay. Time will come. Okay. Guys, please don't mind. I'm starting my breakfast on the fly. Guys, any doubt in creating the folder structure? Please observe carefully how I have created the folder. Use dot. Hello? Yeah. In SRC, we have to create, right? The Access specifier. specifier. Correct. In that, we have to create access specifier dot A, right? See, this is like when you are creating first package inside SRC, you can see the path as well.
and this is your package Okay. maybe. Once you Okay. create this, then you need to create another package inside that package. That time you need to put dot. Okay. Okay. Okay, Okay. the dot Okay. A. Okay, yeah. Like Surbhi, Srirangi, and Lalita. So you need to check like what you can do to have only one login, because this is chargeable account, and Radical is paying heavily to have this facility. Okay, and that works with the individual login. So because this is being deducted as a part of expenditure, so you need to find out if you are logging from mobile, you keep logged in from mobile only. You disconnect from the laptop, because ultimately you are using your laptop only for writing the code, and that don't need login. So Lalita and Shrirangi Surbi. Okay, so please make a note of this. Hello. Yeah, Anju. Can I share my screen? Is it okay? I just want to check. Yeah, sure. Share your screen. No problem. Cannot share my screen. Yeah, go ahead. Hello. Yeah. So you are not using a navigator, right? Is this correct? Like, Correct. Yes, correct. oh, thanks. Okay, so the only a package is created, but the thing is why you are creating that package info.java. Unselect that checkbox moving forward. Whenever you are This one? creating, yeah. So delete both the packages. Delete this. Delete first one as well. Okay. Okay. Click on SRC. Right click. Access specifier in the name, and unselect the checkbox which is just at the below the name. Uncheck that. Okay, perfect. Okay. Wait, source folder. This project is not properly created, but still you can. Why you are not using the my own project? Because this sits somewhere like source folder. See, source folder name is empty. Something is missing in your package structure. Even if you see at the
a radical Java, there is an icon, that exclamatory mark, red exclamatory mark. That is something creating a problem. So the creation of this project happened with some error. Okay, so I will say go into the my own project, the project above, and Yeah. here inside the src create a new folder. Let's see if you are able to create or not. Cancel, right click, new package. Let's see if, see, you can see my own project slash src, which is not coming to your radical Java project. Right, access specifier, uncheck the checkbox. Okay, click on finish, right click on access specifier, A, correct, finish, again click on access specifier and package and put the B, and now you can proceed with the coding. Okay, Okay. okay, stop your screen saving, like screen sharing. I will share my screen. Okay, guys, what is the state of your code? Are you done with the coding? Who has done? Guys, please give package class name properly, which you can understand. Okay, otherwise again it will be difficult um, to know your code itself, like why you have written a particular code and how you want to run that code. Would be a challenging thing after some time. Done. Done. Okay, 1 2 3 4 done. I see. If you start making practice of writing the code, it won't take much time to write the code. But ठीक है चलो. Next week से अपना speed बढ़ेगा. Okay. Not only in terms of writing the code, in terms of feature understanding as well. We will be covering more feature of Java as compared to what we do today.
again the selenium start hoga, then we will be moving with a very slow speed initially. 2 more minutes. Hello.
Okay, so Lalita, you said like static word meaning, but we have not studied static word yet. So give me some time. We'll study the static word again. Okay, because we have not studied the static word. Now we studied public or maybe class, object, method, variable, private keyword, but static word is still pending. Okay. Archana, you are saying something. Just method public. Anju has done the method public. Where I don't know how will she able to access it. Method public. How will she be able to access it? Okay, this way. Public method can be accessed by this way. Public method will be accessible as usual. Only thing is private method only accessible only when it is in the same class. In different class, it won't be accessible. That's what like we were not able to access method 2 because it was private. ठीक है? हाँ, ओके, प्राइवेट मेथड एक्सेस नहीं होगी बट उसी के क्लास में होगा तो होगी ना. ओके, दूसरे क्लास में नहीं हो पाएगी. द क्लास विच इज सी दिस इज आवर डिफरेंट क्लास है, नहीं है, इस क्लास में नहीं हो पाएगी. ठीक है. नाउ मैं थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूं. अभी आई एम क्रिएटिंग वन मोर क्लास विद द नेम test1 in B package. Because why I'm creating this way, test1 किया बस समझने के लिए, so that we can differentiate the thing. I will create this finish. Okay, and I will do something interesting. Yeah, Dino say this same जगह लेते हैं यार. हाँ. Okay, so ये वन नाम का मैंने एक नया क्लास बनाया. क्यों बनाया पता है? Because I wanted to show you that everywhere meaning everywhere, everywhere. I wanted to show you that you can go outside of the package as well. So currently it's still everything was happening in the same package. So what I did, I created another class in different package, and I am able to do the same thing. यार सही तो किया था. ठीक है. So what I did, I created a different class. मैं इसमें कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ. Only thing is I am doing the same thing but into different package, and that's what the meaning of this public everywhere. You can create a package anywhere and you can access this class, and you can access only this method because this is a public method. You can see it's a green dot. It's a public method. For rest you won't be able to access it. Clear? इसको coding I would say I would say like it's optional. If you want you can code it, else leave it. Okay, so that's about the public and private variable and method. Okay, now let's try to understand this protected and default. Obviously we don't know inheritance, so we'll be doing this concept partially today, and we'll try to complete this concept today itself. Okay, so default. Okay, पहले default करते हैं. Okay, पहले let's try to understand the default access specifier. So मैं अभी A में ही जाता, new class. Okay, my default access specifier, that's it. Finish. I will use the same code. Similar code means okay. Instead of private I need to say default. When I say default,
you don't have to put any access specifier. This is the meaning of default access specifier. Okay, default access specifier. Okay, okay, so if you want to have public, private and default, we can do that as well. Okay, public के ये प्राइवेट कर देते हैं. ओके, देन और एक मेथड लिखते हैं, इसको प्राइवेट कर देते हैं. नाउ दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीवियस कोड as well as the new addition to the existing code. Try to understand. Here now we have one public, one private and one default. Public, default and private. Okay, three methods created. Now I want to check if actually my concentration is on actually this, to understand the default access specifier. If you don't want, delete all this code. If you want simplified version of this code, delete this all the method. Okay, आपको simplified version चाहिए तो कोड का simple कोड है, इतना ही कोड एक्चुअली है. Okay, so this is like default access specifier. This is default access specifier. Okay, now let's see default access specifier accessible within the same package. Now let me create इसका test class within the package B. New class, test wala class. Obviously, if we have the test wala class, it will be runnable class with the main method. Okay, and I will create an object of that class, previous class. Okay, obj is equal to new. ठीक है. Okay, अभी एक okay, so इसको import कर लेता मैं. Fix project setup क्यों नहीं है? ओके, ठीक है. obj डॉट ओके, सो कौन सा था अपना मेथड? मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा. पब्लिक, स्टैटिक, डिफॉल्ट एसी बराबर है ना? बी में है क्या? अरे ओके, पैकेज बी इंपोर्ट गलत किया ना. ओके, सॉरी गाइस, बराबर है. अपन बी में किया और ये एक्सेस स्पेसिफाइड डिफॉल्ट. एक्चुअली अपने को इधर करना था पहला. और एक क्लास बना रहा हूँ. होल्ड ऑन. डिफॉल्ट ऐसी 1. ओके, इसको टेस्ट कर देता, रिपीट करता मैं. ओके, रिपीट इसलिए करता क्योंकि मैंने एक्चुअली बी में बना दिया ना टेस्ट वाला क्लास. टेस्ट 1 बना देता है. So my default access specifier, as per default access specifier, all the variable and method will be declared without any public, private or protected keyword, and that's why it will be considered as a default. If it's default, it will be accessible within the package. Where is my package? Package name is my A. तो मैं A package में ही, but I am going in different class where I will say public static void main string args square bracket and curly bracket. Okay, I will create my default access specifier obj is equal to new. इसको कॉपी पेस्ट करते हैं. विद इन द सेम क्लास कर रहे हैं, सेम पैकेज कर रहे हैं अभी. ओके, एंड obj ac डॉट लिखते. मुझे j मिल रहा है. ओके, सो j accessible sysout ओके. मुझे समझने के लिए मैं यहाँ एक कमेंट लिख लेता. डिफॉल्ट वेरिएबल accessible inside same package but in different class. Okay, समझने के लिए लिखा. The same applicable with obj ac dot method 2, which is my default method. If you want to see again, देखो method 2 थी default. method 2 ये comment
मेरे लिए, मुझे समझने के लिए भी ये भी ऐड कर देता. इंस्टेड ऑफ वेरिएबल आई विल जस्ट राइट मेथड. ये हो गया मेरा डिफॉल्ट मेथड एंड वेरिएबल which I am able to access within the same package. But यही तो concept था. Only within the package. Same package means एक जो package में पहला class है. Now my point is बाहर access हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये भी तो चेक करना चाहिए. Okay, so that's what like I was trying to do. या मैंने इसलिए और एक टेस्ट क्लास बनाया. पैकेज के बाहर बी पैकेज में गया, सेम कोड ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ एरर आ रहा है. देखो क्या बोल रहा है, यू कैन नॉट रिजॉल्व द वेरिएबल, मतलब वो एक्सेसिबल नहीं है. तो मैं क्या करता, सॉरी एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं. my default AC which is equal to new, ये ऑब्जेक्ट बन गया. सॉरी, my default आजा. Slow. It's taking some time to search my class. Fine, done. Now what is it is saying? See, error, proper error there. Eclipse बोल रहा है कि okay, so you are trying to access a variable which is default, which is having a default access specifier, and you are trying to do it inside outside the package. आपने A package में ही किसी class में access किया होता तो चल जाता, but you are trying to access in B, and that's why Eclipse is saying this is not allowed. Java is saying it's not allowed, and Eclipse also giving you suggestion. Do you really want to access? Can you, if you want, then make it public. Make it public. Okay, but we don't want to. We just doing this for understanding purpose. We don't want to. मैंने just comment करके लिखा default variable accessible inside the same package, but not accessible outside of same भी नहीं है बेटे, outside of package. Done. ठीक है, default method not accessible outside of the package. That's how I understood the default modifier. Any doubt so far? Okay, कोड भी ओपन करता है. Anyway, default मैंने just प्रूव किया कि जो जावा ने बताया है वो चल रहा है कि नहीं. Okay, जावा ने जो बताया कि नहीं वो चल रहा है कि नहीं. That's what I tried to demonstrate. All good? All good? Will you be in position to write the code then? Even if you want, you can update the existing code as well by writing a new method. By writing a new method, you can update the existing code as well. मैंने सिर्फ सिंप्लीफाइड वर्जन रखा ताकि ये डिफॉल्ट कैसे चल रहा है, प्राइवेट कैसे चल रहा है, पब्लिक कैसे चल रहा है. ओके, सो कैन वी मूव अहेड टू राइट द कोड देन. मैं प्राइवेट वाला पब्लिक वाला कोड चाहिए, डिलीट करता यहाँ से. सेव सी, ये आपका, हाँ ठीक है, ये विद द सेम क्लास, ये बंद कर देता. ओके, सो हमेशा पहले जो वो क्लास लिखो जिसमें बेसिक कोड है, एंड देन यू नीड टू राइट द मेन मेथड. बहुत सिंपल कोड है, देखा. Sir, can object name be same for many classes? Yes, but within same class का variable एक ही होना चाहिए. But you can create as many object with the same name, but provided those are
present in different classes. It's like a variable. I variable अपन repeat नहीं कर सकते, वैसे ही OBJ variable repeat नहीं कर सकते within the same class. But many classes, your question is many classes, answer is yes. तो फिर वो कंफ्यूज है होगा while we are calling. नो नो अपन ऑब्जेक्ट देखो कैसे कंफ्यूज होगा. इस नाम का एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा इस क्लास में, दूसरा बनेगा नहीं. बट इस नाम का हम मैं दूसरे किसी क्लास में बना सकता हूँ, इधर बना सकता हूँ, इधर बना सकता हूँ. आई एम सेइंग वन क्लास में उस नाम का एक ही ऑब्जेक्ट है. इफ सेम वेरिएबल नेम इज यूज्ड इन टू डिफरेंट क्लासेस इन सेम पैकेज, both have public visibility, then how to know which class is referred by with the help of object. आपने ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाया है? ओके, आई विल शो यू दैट एज वेल. चलो ये करते एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज करते हैं. इफ आई हैव सेम वेरिएबल इन टू डिफरेंट क्लासेस. ओके प्रसाद, वी विल डू दिस एक्सरसाइज. इज इट विच ऑफ ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड? बराबर है, आपने ऑलरेडी प्रसाद आंसर लिखा है. ये एक्सरसाइज करते, मैं क्विकली एक्सरसाइज करके देता. Yeah, चलो. देखा आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब इंटरव्यूअर को भी ये क्वेश्चंस पता होगी और इंटरव्यूअर भी ये क्वेश्चन पूछेगा. सिंपल सिंपल कंसेप्ट है बट एडअप हो रहा है. ओके सो मैंने वेरिएबल पढ़ाया आपको, कोई मुझे बताएगा मीनवाइल एक लाइक ऑन द फ्लाई वन क्वेश्चन, ये कौन से टाइप का वेरिएबल है, मीन्स कौन से हाई लेवल कैटेगरी का. आईएनटी का बात नहीं कर रहा हूं मैं, ग्लोबल वेरिएबल है. करेक्ट. सो ये याद रखो, ये ग्लोबल वेरिएबल यूज हो रहा है ऑलरेडी. मेरा स्क्रीन शेयर चला गया क्या? ओके सो इट्स ओके इट्स ग्लोबल वेरिएबल. ओके ये हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं अभी, ये मैं फिर से रिपीट हर बार नहीं बताऊंगा, राइट. सो इट्स अ ग्लोबल वेरिएबल. डू रिमेंबर these are the object creation syntax. Okay, this is way by which you can access the variable. This is the way by which you can access the method with that object. की पता है ना, की घर की वही. सो अभी ये मैं रिपीट कर, ऑब्वियसली लास्ट क्लास में जो हुआ मैं एज्यूम करूंगा कि एटलीस्ट आपको बेसिक चीजें पता है. ओके ऑब्जेक्ट क्रिएशन, मेथड कॉलिंग. सेलेनियम में सेलेनियम ऐड होगा, टेस्टेंजी भी ऐड होगा, फ्रेमवर्क ऐड होगा, फिर कुकुम्बर आएगा. इमेजिन जावा चल रहा है अपना, lot of different tools and technology. Make sure that you do the practice. And sometime I feel that you are, can we do the default access specifier for class also? Okay, do it and let me know if you are able to create the object in the same class and you are able to access outside of the class. Try it. Okay, मैं फिर से एक चीज दिखाता. Okay, see class name, अपन class करने जाते हैं ना. So since Lalita has brought that point, so Lalita, guys, you can ping everything on the chat to everyone. Okay, so that everybody can understand your question. When you try to create a class, you can see अपन अभी तक ये मेथड यूज कर रहे थे. This Eclipse provide few basic feature of modifier. Okay, public modifier for the class, package means default modifier. Okay, इसको default ही बोलते हैं. प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ये एक्सेस स्पेसिफायर क्लास को एप्लीकेबल ही नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि अगर प्राइवेट बना दिया क्लास तो उस क्लास को यूज करेगा कौन? उसका कोड कोई यूज ही नहीं कर पाएगा. प्रोटेक्टेड का भी वही है. ठीक है. सो ललिता, मे बी यू कैन ट्राई इट आउट डिफॉल्ट एंड डू लेट मी नो. चलो ये 6 लाइन का कोड है गाइज.
Done. Surabhi done. Prasad done. Pradyum done. Saurabh done. Priya done. Okay, so I have enough done now. प्रसाद ने क्वेश्चन पूछा था. ओके, सो वो एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं. मैं क्विकली एक क्लास बना था. ओके, टेस्ट क्लास. ओके, 1 करता इसे. फिनिश. ये क्लोज कर देता इसको. int I is equal to 10. ओके, उसके बाद इसको 2 कर दिया. ओके, क्लास 2. ओके, int I is equal to 20. ओके, नाउ इसका टेस्ट क्लास बनाता. कंट्रोल C, न्यू क्लास. टेस्ट क्लास, ऑब्वियसली टेस्ट क्लास है तो क्या रहेगी? मेन मेथड बना दी. टेस्ट क्लास 1 ओ क्लास ओ ऑब्जेक्ट है इज इक्वल टू न्यू. छोटा एक्सरसाइज है एकदम. class 2. Okay, I want to access ये 10. ओके, ये 10 एक्सेस करना है मुझे. ये कौन सा क्लास है? टेस्ट 1. मुझे इस क्लास से इस ऑब्जेक्ट से आई कैन एक्सेस दैट वेरिएबल. इस क्लास से कंट्रोल C, कंट्रोल V डॉट I. ओके, आपको फिर से देखना है. ये देखो यहाँ लिखा भी उसने, ये वेरिएबल किस क्लास से आ रहा है? टेस्ट क्लास 1 से आ रहा है. क्यों? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट उस क्लास का है. जिस घर की चाबी है उसी घर का सामान एक्सेस कर पाओगे आप. ओके, sys out o class dot I. ओके, एंड सिमिलरली ये रहेगा o class 2. though we have two different classes having the same variable. अभी मैं नेक्स्ट इस क्वेश्चन को और एक्सटेंड करता रन करता हूँ. ये क्लियर? ये असाइनमेंट नहीं है, ये मैं जस्ट प्रैक्टिस करके दिखाया आपको. 10 and 20. 10 is accessible from class 1. 20 is accessible from class 2 since we have created a different object. Clear? ये clear? किसी को लिखना नहीं है. Any doubt so far? ये क्लियर? अभी मैं बोल रहा हूं कि दोनों क्लास के नाम भी सेम रखते ना. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? दोनों क्लास के नाम भी सेम रखते हैं. ओके, क्लियर? दिस वन सिंपल, राइट? 10 20 20 इधर से एक्सेस हुआ, 10 इधर से एक्सेस हुआ, डिपेंडिंग अपॉन द क्लास 1 क्लास 2 बिलोंग्स टू विच क्लास. ठीक है गाइस, सबको समझा है क्या किया? इससे सिंपल कोड लिख नहीं सकते. इससे सिंपल मैं दो लाइन में कंसेप्ट करने का ट्राई कर रहा हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ जावा. 1000 लाइन भी लिखे तो कंसेप्ट वो एक ही रहेगा. एक वेरिएबल को हमने टेस्ट किया या 1000 वेरिएबल भी लिखे मैंने, ओके, द कंसेप्ट विल रिमेन सेम. ओके, सेम विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द वेरिएबल. ओके, नाउ मैं क्या बोल रहा हूं, क्लास का नाम भी सेम रखेंगे तो क्या होगा? सिर्फ क्लास का नाम भी सेम, वेरिएबल नेम भी सेम. ओके, तो कैसे पता चलेगा कौन से क्लास से क्या एक्सेस हो रहा है? इंटरेस्टिंग पार्ट. हाँ, इंटरेस्टिंग पार्ट. मैं क्या कवर कर रहा हूं पता है?
importing the package. Okay, importing the package. What is the meaning of this import package? मैं बोल रहा हूँ क्लास का नाम भी सेम रखते हैं, फ्रेश करते हैं, एकदम फ्रेश कोड. माय प्रोटेक्टेड वेरिएबल रह गया है यार इस चक्कर में. ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से क्रिएट कर रहा हूँ, ये डिलीट करता. माय क्लास ए करता. ओके, माय क्लास ए. ओके, ये आपको कोड लिखना है. ओके, माय क्लास ए, इसमें कुछ नहीं, फिनिश. पब्लिक int I is equal to 10. ठीक है, एक क्लास में है. नाउ आई विल क्रिएट द सेम क्लास इन द सेम पैकेज. पहली चीज होता है क्या, क्लास एरर है, सॉरी एरर है. यू कैनॉट क्रिएट द सेम क्लास नेम इन सेम पैकेज. ओके, you cannot create the same class name in same package. Okay, can I create in B? Okay, B में बना सकते हो क्योंकि का पैकेज नेम में कर रहा हूँ create. Can you see that? Now I have created two class having same name. Okay, and I will create the variable also same but with different value only. क्या हुआ? ठीक है, इसको 20 दे देता. Now I want to print 20. Okay, in C class. My class A test करता, my class A test है तो main method. Okay, my class का object बनाना है मुझे. Can you see that? I want to create an object of class A. अभी मेरे पास दो क्लास है, दोनों का नाम सेम है, आप ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे? Getting what I am trying to do over here? Okay, so here it's one class, here it's one class. इसमें 10 है I की वैल्यू, इसमें 20 है, और मुझे इस क्लास में दोनों वैल्यू प्रिंट करने हैं, 10 भी करने और 20 भी करने हैं. हाउ कैन आई डू दैट? असाइनमेंट, लेट्स स्टार्ट इट नाउ. चलो स्टार्ट करो. आप कोड करके दिखाना मुझे ये कैसे कर पाओगे, क्योंकि अपन ने जावा जितना सीखा है वही है. ओके, सो लेट्स डू इट. Right now you need to create this my class A, again my class A in package B, just simple single variable. Okay, and test class in package C, and print 10 and 20. How? Okay, guys, we are taking break as well. Okay, so we will take 10-minute break. You can have your breakfast, tea, coffee, and then we'll continue with this assignment. And this assignment is for everybody. Class A, my class A, my class A, but in different package with different values, and my test class in another different package. And how you are going to print both the values? This is my question. Everybody clear with assignment? You can carry on, and you can carry on with the assignment. You can take the break as well, and we'll continue from here. But we'll complete this assignment first. If you are not able to do it, I will start writing the code after the break. Chalo, see you. Bye bye.
Anil sir. Hello.
Hey guys, I'm back. Is everyone back? Is everyone back? Sure. Okay. Can I share my screen? I have an Uh, issue. For which program? It is in general. Okay, yeah. I Share cannot. it. Share it. I thought like the existing program. No. Okay, share it. I'm just stopping my screen share. Okay. Okay, so this is default class you created. And See, I have these 3 packages, and like previously, I was trying like this is my default methods. prior to See, that, just do one thing. Could you please click on that double arrow? It's in the left panel. In the left panel on the top, there are double arrow in opposite direction. On little bit on down, little bit down. double Two arrow. two yellow arrow. Yeah, Yes. click on that. Okay, so you can see now the class which is open on the right side will be highlighted on the left side by this. If you click on this icon, this is how it behave. Now you show me. Okay. So I was just trying to create an object in another package, Mhm. but this is giving me like cannot be resolved to a type error. Okay, so what is your class name? Default. DAFAULT. Is there any spelling mistake? Okay, No. so okay, just go to the end of the class and press Control space. Just go to the end of the class. No. Default class, line number 7. Line Default number class? 7. No. You already have that same class open. Okay. Line number 7. Hmm. Go to the end of SS, class wala SS. Not Okay. that one. First class name. Okay. Correct. And press Control space. Control space. Okay. So what happened? And this is what I am teaching actually. Okay. Line number 3 got added. Okay. So that's what like I'm showing now. So you will understand the importance of this import keyword. Okay. But your problem is resolved, right? Yeah. Okay. So I mean, this was a technical glitch, right? Yeah. Technical. Like Technical. if okay, you are going to teach. Yeah, I'm going to demonstrate the same thing. This is why I created this a program with 2 same file. Okay. Let me share my screen. Okay, so guys, this is what the assignment is. Okay, so I cannot open 3 classes, so that's why please bear with me. I can show you 2 classes. So see, let's go and revise the thing. My class A having variable 10. There is one more class. Okay, one more class with the same name, exactly same name, but this is sitting in package B. Okay, so if you look at, but having value I as a 20, and I want to print both this value because those are public variable. I want to access both the variable and I want to print both the variable. So that's why I created this one. Now let me go Control C. I want to create, obviously I need to create an object. Control space. It is saying for which class you want to create an object. So दोनों का नाम same है, 2 class आए, ये तो और भी एक है, कहीं तो my class ही है. Ignore this. Okay, अपन इन दोनों की बात कर रहे हैं, इन दोनों पे concentrate करते हैं. इसको भी यूज कर सकते हैं obviously, but ये long time back लिखा होगा मैंने कोई टेस्ट करने के लिए. My class A batch 24 का पैकेज एक्सेस स्पेसिफायर, उसमें A पैकेज में ये है, B में ये क्लास है. मुझे कौन सा एक्सेस करना है? लेट्स गो वन बाय वन. पहला करते A वाला. Okay, the moment I do this, what happens? You can see. Okay, the path of that folder. Obviously, SRC is a parent folder that won't be a part of this path, but बाकी का path add हो गया है. Let's delete it. Anil, I want to add this. How to add this? Control space, and you will be able to see this list. Okay, so मैंने add किया
ऑब्वियसली मुझे इसका क्या करना है, ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल टू न्यू, ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया. नाउ सिस आउट, मुझे ओबीजे ए डॉट आई एक्सेस हो गया. फाइन, लुकिंग गुड. रन एज जावा एप्लीकेशन एंड my 10 printed means I am able to access इस क्लास के इस क्लास का वेरिएबल that was I. Now I want to access this variable as well. Okay, जो 20 है within the same class. ये मैंने इंपोर्ट किया था. इंपोर्ट का मतलब ये होता है कि ये क्लास जो जिसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया वो इस पाथ पे प्रेजेंट है. ओके, नाउ आई एम क्रिएटिंग अनदर my क्लास ए. यार बट माई क्लास ए राइट, ये एक्सेस करना है. ये गया. ओके, सो ये इट इज गिविंग मी समथिंग लाइक दिस. ओके, prior to that let's go back. I want to say कि ये मैंने A1 करता है इसको. Okay, just for understanding purpose, since I am creating an object with A1, let's see what happens. A1 देता, let's see what it is getting printed. मैंने इसमें तो 10 print हुआ था. I am expecting to print 20. Will it going to happen? No. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट भी उसी क्लास का है जो इस पैकेज में प्रेजेंट है. नाउ हाउ आई वुड यूज माय क्लास फ्रॉम बी पैकेज? Can I simply go ahead and change this B? Okay, can I simply go ahead and change this B? Okay, save it, run it. 20. Okay, ये हाईलाइट हुआ है, इसको इग्नोर करो. ओके, बट मुझे अभी 10 और 20 चाहिए. मुझे अभी 20 आ रहा है. क्यों? क्योंकि मैं आई एम यूजिंग, इन शॉर्ट ये बता रहा है कि जो भी क्लास हम इधर यूज कर रहे हैं, बिकॉज we have not created this class in our own class, we are using this class. उसका path मतलब import statement होता है. How I am adding with the control space. This time I want to use package A and B वाले both the class having the same name. At one moment I can use only one package. Can we have, यहाँ ऐसा लिख सकते हैं क्या B और A? एरर देता है, ये बोलता है कि ये इंपोर्ट यूज ही नहीं हो रहा क्योंकि क्लास नेम एंड में जो ए होता है दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए यूनिकनेस. सो इसको यूज नहीं करने दे रहा. तो अपन बी या ए का, दोनों में से एक का ही यूज कर पा रहे. करंटली इट्स यूजिंग बी और मे बी ए. लेट्स गो बैक टू द प्रीवियस स्टेट. नाउ इफ आई प्रिंट दिस, इट विल बी अगेन 10. I want to have 10 and 20. For that I need to do something different, and the different thing is fully qualified path, and this is fully qualified path. Okay, you need to have the fully qualified path if interview question hai, if we have same name of a class but present in डिफरेंट पैकेज. 10 और 20 मैंने प्रिंट कर लिया, मतलब फुल्ली क्वालिफाइड पाथ. एब्सोल्यूट पाथ है पूरा, रिलेटिव पाथ नहीं. यहाँ क्या होता है, ये रिलेटिव पाथ के जैसे काम करता है. ये बोलता है कि मुझे इसको एक्सेस करना है. आई विल एक्सेस दिस. ओके, बट मुझे सेम क्लास अगर सेम नाम का मुझे है तो आई वोंट बी एबल टू एक्सेस इट. यू नीड टू प्रोवाइड द एंटायर पाथ of this package which is present inside src folder. Getting intro को ये क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी है कि आ सकता है. क्लियर? इंपोर्ट कंसेप्ट क्लियर हुआ है? इंपोर्ट क्या होता है? आप मुझे ये देखो, ये डिफॉल्ट एसी एक्सेस करना है इधर. माय डिफॉल्ट एसी किधर? अभी जो क्लास था अपना ये देखो क्या होता है. मैं इसको भी एक्सेस करता.
जस्ट वांटेड टू शो यू। देखो उसका भी एक एंट्री ऐड हो गया है। अनिल, इफ आई एम यूजिंग 100 क्लासेस इन दिस कोड, 100 इंपोर्ट स्टेटमेंट आ जाएंगे, 100 इंपोर्ट स्टेटमेंट आ जाएंगे। ओके, क्लियर? क्या डिलीट कर देता है? और यहां लिख लो आपको जो भी लिखना है कि फुल्ली क्वालिफाइड पाथ, आई एम एबल टू एक्सेस दिस क्लास विथ फुल्ली क्वालिफाइड पाथ। क्लियर? ठीक है, चलो ये कंप्लीट कर लो प्रोग्राम, रेफरेंस के लिए चाहिए ये। कंट्रोल स्पेस टाइप किया ना क्लास का नाम, कंट्रोल स्पेस दबाया तो आ जाता है। मेक श्योर दैट यू डोंट डू द स्पेलिंग मिस्टेक। डन, अर्चना डन। I have one question. yeah. So basically, this feature currently that we are having, the import part, it is of this intelligence is Java is showing, or it is Eclipse IDE that No, we it's Java. Java. This concept is Java. Eclipse is just giving us a, see, if you write this notepad, this won't come automatically. You have to type. Eclipse Yeah. just giving you the facility that this will be automatically placed over here. That's the only thing Eclipse is doing. This is Java concept. You need to have this present. Even if you write in TextPad, and TextPad code needs to be written exactly the same way. Only thing is in TextPad you need to type. Here few shortcuts are there which make sure it's easy to write the Java code. Okay. आपको क्लास ए माई क्लास ए let me know once you are done. So, okay, Archana sir, there is a restriction to place a variable or any declaration before class name. Your question is समझे Archana, but is there any restriction to place the variable or any declaration before class name? Class name से पहले, like now import is in between package name and method name. Package name, हाँ ये इधर ही रहता है। ये क्या है? ये आप बोल रहे हैं ऊपर रखना। ओके, नेवर ट्राइड। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई डोंट थिंक इट विल वर्क। नहीं वर्क हो रहा क्योंकि पैकेज इज समथिंग which will remain at the top. नेवर ट्राइड, मैंने भी कभी सोचा नहीं, पता है, बट चलना नहीं चाहिए था और चला भी नहीं। ओके, इंपोर्ट स्टेटमेंट क्लास के अंदर, इंपोर्ट स्टेटमेंट क्लास के अंदर भी नहीं चलेगा। आई डोंट थिंक, देखा नहीं चला। नहीं मतलब यही सिंटैक्स है। Can we means what we can say? Can we declare the variable here Yeah. before the public class? यहाँ नहीं, everything needs to be inside class. Okay. ओके, नहीं कर सकते। Okay. क्लास के अंदर ही होना है जो भी होना है, क्योंकि देखो घर के बाहर मतलब जो भी होगा वो घर के अंदर होगा। ओके, sort of you can't Okay. do anything outside of your home. The similar way you can't have any code which is outside of your class. दे करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखना चाहिए, लिखना पड़ता है मतलब सिंटैक्टिकली।
Done? Everybody? What about others? हो गया? Okay. Okay. Now, guys, you are going to write the protected. मैंने डिफॉल्ट सिखाया आपको. मैंने डिफॉल्ट सिखाया, कहाँ गया एक्सेस स्पेस पे? मैंने पब्लिक सिखाया, प्राइवेट सिखाया, डिफॉल्ट सिखाया. आप मुझे प्रोटेक्टेड सिखाना है आपको, इनहेरिटेंस का पार्ट छोड़ के. तो इसका कोड लिखो और मुझे दिखाओ. प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर इज एक्सेसिबल विद इन द पैकेज. और यहाँ एक मतलब हिडन लाइन है. It is not accessible outside of the package. You need to create a class which is having one variable, one method, which is both are protected, and prove me that it is accessible only within the package and not outside of the package. ये prove करके दिखाना मुझे. ये इतना sentence सिर्फ. I will wait for your code. Okay. Once you are done, share it. I will correct it if required. Protected access specifier मुझे आप कोड अब भी कर रहे हो. अब भी इट्स नॉट होम असाइनमेंट, अब भी कर रहे हैं. एक्चुअली सबको पता है मैंने ऑलरेडी ये कोड कवर किया है. आपको नया क्लास बनाना है और वेरिएबल डिक्लेयर करना है, एक वर्ड यूज करना है, बस प्रोटेक्टेड है. बाकी कोड भी रेडी है आपके पास. आई जस्ट वांटेड टू सी कि आप सोच पा रहे हो या नहीं अभी. Meanwhile, I will keep this code open. I hope you have written a class name as a my protected. Okay. Test class. Okay. So is it okay if I do it in the same? Okay, मैं चेक कर रहा हूँ. हाँ ललिता, आई एम जस्ट चेकिंग माय प्राइवेट क्लास में ही आप बोल रहे हो. ये तो प्राइवेट क्लास है राइट. मैं प्रोटेक्टेड की बात कर रहा था.
बट ये सही है कोड आपका, मेन मेथड लिखी है, मैं ये सही कोड है। माय प्राइवेट मेन क्लास, नहीं उल्टा हुआ ना। ओके मेन क्लास, ओके मेन क्लास, ओके ओके ठीक है। इसमें मेन मेथड नहीं, बट ये दिस इज योर रीयूजेबल कोड। माय प्राइवेट क्लास, प्राइवेट का सही है, आपने प्राइवेट को ही मॉडिफाई किया राइट। उस मतलब एग्जिस्टिंग क्लासेस में ही ऐड कर दी एक मेथड। मैंने मेथड प्रोटेक्टेड कर किया दी है। उसमें एक, या ओके, और मेन क्लास में उसको एक्सेस किया, यस। और ये एक्सेस हो गई क्योंकि दोनों का पैकेज ऊपर एक्सेस स्पेसिफाई है। मुझे ये भी दिखाओ कि वो दूसरे पैकेज में एक्सेस ओके नहीं हो रही है। ओके सही है कोड आपका, ऑल गुड। महेश डन, ओके गुड। So Lalita had shared the code as well, guys. For your reference, you can. Prasad is also done. तीन तीन कंसेप्ट अपन ने पढ़े हैं, and fourth is ultimately we are able to write the code, and most of you are able to write the code. Even if you are not able to write code maybe today, you will be able to write tomorrow. How? Obviously, you need to go through the code details. Almost सबने लिख लिया code. Almost. I'm still giving 2 minutes, last 2 minutes for others to complete the code, protected code. Protected वाला code. चलो guys fast. आज अपन ने import statement देखा और access specifier देखे। Can't access the in test I have done method as a protector. Perfect, यही है अपना राइट की, बट इनहेरिटेंस जब होगा तब एक्सेस कर पाओगे। ओके सो इनहेरिटेंस नहीं पता, अपन जब करेंगे तब सीख लेंगे, बट दिस इज करेक्ट ऑब्जर्वेशन, कीप दैट एज इट इज। अपन क्या करेंगे, वो एरर जो आ रही ना उसको इनहेरिटेंस लाएंगे और वो कंप्लीट करेंगे फिर। ओके अभी एरर आ रही जिसकी ना, वो एरर अपन सॉल्व करेंगे वंस वी लर्न द इनहेरिटेंस कंसेप्ट। ठीक है, ओके ओके सो गाइज इवन आई एम राइटिंग द सेम कोड ऑफ प्रोटेक्टेड। क्यों? क्योंकि मुझे भी वो कोड लगेगा ना, कंट्रोल से जब मैं, मुझे भी ये करना है क्या, माय प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर फिनिश। सिर्फ क्या करना था पता है, ये जो माय डिफॉल्ट था ना, यही कोड है ना, लेना है प्रोटेक्टेड वाला ये कोड। ये हो गया मेरा कोड, इसको सिर्फ प्रोटेक्टेड और दैट्स इट। ये बिहेवियर भी सेम करने वाला है। ओके इसका मैं विद इन द सेम क्लास, विद इन द सेम पैकेज, अरे यार क्या क्लिक कर रहा हूँ, विद इन द सेम पैकेज नो, इसको टेस्ट ये
डॉट जे भी एक्सेस हो रहा है, सिस आउट। मैं ये क्यों कोड लिख रहा हूँ, क्योंकि आज न कल मुझे भी लगेगा वो जब इनहेरिटेंस सीखेंगे तो। ओके, प्रोटेक्टेड की मेथड स्क्वायर डायमंड में आती है, मतलब यहाँ सजेशन में, तो उससे पता चलता है बाय जस्ट लुकिंग एट दिस सिंबल कि ये प्रोटेक्टेड मेथड है, ये लो। ठीक है, ये एक्सेस हो गया। मैं ये सेम क्लास ये कॉपी कर रहा हूँ पूरा क्लास, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, माय प्रोटेक्टेड टेस्ट, इसको A1 दे देता, पैकेज ये भी हो गया ना। ओके, रीनेम कर देते इसे, और ये उधर से इंपोर्ट हो जाएगा प्रोटेक्टेड। ठीक है, देखो यहाँ भी एरर है और यहाँ भी एरर है। क्यों? क्योंकि मैं पैकेज के बाहर गया, पैकेज के बाहर एक्सेस नहीं होता, ये कोड ऐसा ही एरर वाला कोड मैं ऐसे रखता, एंड we'll visit the same code again once we learn the inheritance। inheritance में हम देखेंगे कि inheritance के बाद ये कोड कैसे चल रहा है। ठीक है, okay, so that's all about this slide, where except this we tried to demonstrate everything. So there is one assignment on this, and the assignment is you have to create a single program with 4 variables. Each variable will be like, one will be public, private, protected, and default. And there would be 4 method: public, private, protected, and default. Try to combine all this code in single class and single test class. Clear with the assignment? You need to have only one class which hold 4 variable and 4 method. Sir, I have already made it in the same. Hello, anybody saying anything? Yes, I have already done it. Hello? Hello? Actually, there is a lot of surrounding noise. Hello, who was that actually? If you want to speak, I have already created the same. Perfect then. Perfect, Radhika. That's fine. You already created. That's fine. If not created, you can go ahead and create it. Okay. Okay, so that's one part. So far, all good? Access specifier looking good? Chat channel open. Anil sir, I have one question. Yeah, actually in industry, are all access specifier used or only public and private are widely used? Okay, so to be honest, we rarely use this default and protected. To be honest, public and private, that's the only access specifier generally we use. Okay, I hope I Okay. answer. Oh, why we are not using other access specifier? Hmm. To be honest, everybody is actually using public. Only thing is, we need to educate the team that instead of using this particular method, use that method. Okay, but there is a way to have the restriction. I generally go at least for few private method within the class, which can be reused within the class itself. Okay, so I would say even if we use all public, that is also going to work. Only you are going to decide, or the end user who wants to use your code will decide that if you want to use which method. If he means he's not understanding like why those code is written in any, if he's directly contacting you like, okay, could you please provide me all the details about this method, how it works, that's solve the purpose, right? He won't be using accidentally a method which is not supposed to be used. Mhm. Hello, anybody saying anything? No, sir. Yeah, this is I wanted to see. Okay, Thank you, sir. Yeah. so public private are being used mostly. I am saying even if you use public, everybody is using everything as a public, that is also fine.
the person who is going to create an object of your class, he knows that which variable I need to use, then that's fine. He is not going to accidentally use the even public method which is not supposed to be used. But if we don't want to like have that I would say the coding structure, and we don't want to use that accidentally as well, then we can go ahead and make it private. To be honest, I am using only two. We have so many, like I told you, like thousands class. We are mostly using private and public method. Protected, we are already have a segregated code in the packages, and we know like which packages is from belongs to which team, which module. So we are ultimately not using that code. So because we are mature enough to understand like what codes needs to be used and what will be the impact if I try to modify the existing code which is written by someone else for some other purpose. So public and private generally we are using. Even I will show you in automation, maybe in once we are done with the couple of script, I will show you like how we can utilize this public and private in real use while writing the automation code in Selenium. Sir, private, this J is protected. Now it will be accessible in protected test, my protected test, right? In the same package. Yeah. Okay. I accessed it as well, right? Yeah, this one. Yes. Okay, yeah, correct. Archana, this, right? Yeah, yes. Yes. Okay, yeah. Exactly default. Default is whatever we have written, everything for default, it's exactly same. Only thing is this time I put the protected word. Default is like you don't put Okay. any keyword. Okay. Understood. Okay, and there is a error as well in protected class, but this error is because inheritance, we don't know inheritance, and we'll correct this one. Okay, Okay. once and we will understand the inheritance, and then we'll correct this code. Till that point, let's have this error. Okay, so guys, how it's going? How it's going? All good? So far, Java basic. Even we have not started the oops concept. oops concept मैं सोच रहा हूँ आज थोड़ा चालू करो. एक छोटा कोड एकदम. Can I share my screen? Yeah, sure. Yeah. Let me stop my screen share. Okay, so here I have created this. Is my screen visible? Yes. Okay. Yeah. So here I two variable. One is default variable and one is protected. class. Yeah. Mhm. And in access specifier A. A, Okay. correct. So same class I have created in the access. Hold on. Why you created them? Okay. You Yeah. need Yeah. to Yeah. create Yeah. main method. Yeah. I just wanted to access from Okay. the First thing. others. You click on that double arrow. Okay, click it. Correct. Now the right program is highlighted on the left side as well. Okay. Yes. Otherwise, those are not sync. Okay. Now it's correct. Huh? Now you can see like my protected class on the right side. Where is your test class? Below that. Below Test that. class. I wanted to access from this. Okay, then it won't be. It won't be because those are protected and we don't know inheritance. Only. Okay. Okay. And there is one more protected test class in the Yeah, package. here. Correct. Open it. Yes. Okay. So from here this I is can, working. Correct. Yes. Correct. That's what you demonstrated. It means Yes. the concept is actually implemented. Okay. Anything else, guys? No. Fine. Okay. Stop your screen share. Thank you. Let Sorry. me. Yeah. Prasad. I'm getting some error. Maybe can I? Yeah, please share your screen. Yeah. So. Okay. Okay. So this is your default test. I want to see default. No, protected AC. Correct. Yeah. Both are protected. Perfect. Now let's go to the test class within the same package. Perfect. And you are unable to access variable
as well as, okay, save your all code first. Save your all code. One, Oh, because you know what happened. Okay, why you Huh? want, you have to save it, and that's why make a habit to save all that floppy वाला multiple floppy वाला icon है ना, उसके बाजू okay. वो हमेशा click करने का reason बताता. You know what happens? Eclipse tries to run the code which is already compiled and created a .class file. Okay, and what happens when we don't save the program? Generally, the .class file is not created, which is maybe the old one. Okay, Yeah. and .class file, since it was not saved, it was still carrying the last reference where you won't have that files or the variable. When the moment you saved the code, it started getting the access to the latest code, because those are in different file now. That's why we need to. Okay. Maybe I was using this one, so I'm not. Let's start using the save all. Fine, guys. Yeah. Okay. So Yeah, for thank you. others as well, this is for others as well. Okay, maybe you can stop your screen share, Prasad. Okay, so see guys, he has written a really nice, neat and clean code. Make a habit to write such type of code. See, access specifier, then basics, then control flow, then exercises. Okay, so everything is like a well organized. Okay, this will help you to revise. We will be writing hundreds of classes at the till end, means in next 3 months. So you should be able to find your own code. That I always used to say, if you write your code, only one person can understand your code. Do you know who is that person? God. God. Correct. Only God can access your, means understand your code after some time. Not you yourself as well, not the owner of that code as well, only God. Okay, and that's the fact. Even 2 days back, I told my colleague, like, who has written this code? Okay, I found one piece of code. I thought like it's very wrongly written, and you know who wrote that code? It was written by me 4 years back. Okay, so you know you never know, like. Uh, so that's why, like, we need to have the proper documentation, organized code. At least that things will help us to understand the code. Okay, and don't keep our God busy in debugging the code. Okay, so he is having a lot of different priority items to be resolved. So let's have our clean and neat code. Okay, so done. Okay, ये मैं कोड ऐसे रख रहा हूँ. Now guys, ये देखो, import statement होगा अपना. static बचा है, right? static बचा है अभी भी वर्ड. अपन ने मेथड देखा, मेथड का रिटर्न टाइप देखा, मेथड को वेरिएबल पासिंग देखा, ऑब्जेक्ट बनाना देखा. ओके, वो एडिशन वाला प्रोग्राम किसने बनवाया नहीं है अभी तक. मैंने देखा विक्रांत का. आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट कोड, बट दैट इज समथिंग व्हिच आई एम स्टिल लुकिंग फॉर, कि मुझे आपका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का कोड चाहिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोड. आप गूगल करो, कोई बात नहीं, आप पढ़ाई करो, कहीं से भी कॉपी पेस्ट करो, बट समझ के लो बस कोड. कि आई वुड से ट्राई करो, गलत होने दो, गलत होगा तो भी चलेगा. एडिशन आई कैन शेयर, आई हैव डन इट. ओके, आई कैन शेयर एडिशन. ओके, ठीक है, शेयर करते हैं फिर. बट गिव मी सम टाइम. महेश, यू वांट टू शेयर? आई हैव डन इट. महेश, लेट्स शेयर इट क्विकली, 2 minutes. So that it will be a reference, and maybe you can share on the group as well. Okay, group पे share करो ना, मुझे पता कैसे चलेगा आप लोगों ने किया है कि नहीं. You are getting. I am इतना भी बताया ना, I am done with assignment. तो भी मुझे मेरा confidence बढ़ता है कि somebody is doing something. Okay, and they are able to do it. So I see 5 guys have done that code, and nobody informed on the group. Okay, and even in the morning. Anyway, share it. मैंने stop कर दिया मेरा screen share. Smash, over to you. If you would like to explain, we are okay with that as well. What you have created, just if you can explain. Okay, we can see your screen. Basic Java. Check number, So- saying calculator. ठीक है, हाँ.
So I have given the name as calculator. It's very ठीक है, basic. चलेगा. Perfect, So perfect. written 4 methods here: addition, divide, subtraction, and multiplication. Then I have created one test class. So basically just calling that method and passing the values. Perfect, perfect. Print it. Run it. There is no message bar, so it will be directly printing the results. That's fine, that's fine. Result is fine. The thing is, 30, it's not 10, about 10, and 100. it's not about like we don't know addition and subtraction. We are just working with the syntax of Java, and you did it. That's it. Irrespective of value, irrespective of cosmetic things, I am not worried. Like we have to just create a basic simple things. Maybe you can go ahead and share this code over the group as well as a reference. I thought like nobody did this code, and even I was thinking like I have to write this code from the scratch, but you guys are trying. Try it. From I am done with all assignment. Perfect, Pradyam. So I think seems like most of the guys, Prasad is also done, Saurabh is also done. Yeah, good. Very happy. Very happy. Okay. Okay, Priya also done. Perfect. Okay. So that's all. Please keep sharing your feedback, your observation, finding, assignments over the group channel. One simple statement is sufficient to boost my confidence that you guys are working. Okay. So मैं एक नया concept चालू कर रहा हूँ. Okay. And that concept is constructor और एक ही program लिखने वाले, सिर्फ एक ही program लिखने वाले आज. एकदम सिंपल वाला. और टाइम मिला तो मैं स्टैटिक वेरिएबल के बारे में बात करूंगा, बट मोस्टली आई विल टेक दैट स्टैटिक वेरिएबल पार्ट फॉर टुमारो अगेन 8:15 to 8:30. I will try to book this session from 8 to 8:30 discussion and out. 8:30 actual syllabus will start. Okay, so guys, we are entering into the OOPS concept. So I see most of the guys are from computer science background. Can you please tell me what is OOPS concept? Can you please tell me what is OOPS concept in plain English language without using any technical word? Or what you understood? Sorry? Object-oriented program. Okay, very nice. Long form बता दिया. Okay. Can you tell me abstraction? मैंने बोला यार जावा मुझे नहीं आता. जावा मुझे नहीं आता. Okay, encapsulation, abstraction, inheritance, ये इंग्लिश वर्ड है, बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, पता है. ये डोनाल्ड ट्रंप यूज करता है ऐसे वर्ड, और वो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा. सिंपल लैंग्वेज में बताओ मुझे, सिंपल लैंग्वेज में. आइडियली व्हाट्सएप चैट पे शेयर करो प्रोग्राम. व्हाट्सएप चैट के ये चैट डिसअपियर हो जाता है. प्रोग्राम शेयर करना है ना, व्हाट्सएप चैट पे एज अ फाइल करो, एज अ टेक्स्ट करो. ओके. अरे बोलो कोई. What is OOPS concept? Improves the readability and reusability of the program. No, you are not audible. Who is this? You are not audible. Yes. Tell me, please. Make sure that you have the right position for your mic. Hello. Yeah, go ahead. What is So OOPS it concept? improves the code readability and Readability and reusability. reusability. Okay. और कुछ कोई बता नहीं रहा. गूगल कर रहे हैं क्या? अरे गूगल मत करो. मोस्ट ऑफ द गाइज आर कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड गाइज. ओके. आज अगर आपको OOPS कंसेप्ट के लिए गूगल करना पड़ रहा है तो दैट्स नॉट गुड. ओके, सो लेट मी टेल यू गाइज व्हाट इज OOPS concept. OOPS concepts are object oriented. Okay, fine. OOPS concept means, okay, it's a guideline to be followed for well organized code. Okay, it's a concept which can be use it or lose it. It's not something that you have to use it. Okay,
use it or lose it. If you don't want to use any oops concept, that is also fine. Without oops concept, can we write the program? अपने इससे पहले भी लिखा तो आगे भी लिख पाएंगे. But it will make your life more easy. You can make your code more organized, systematic, so that we don't have to get our God to learn that code. Okay, so we as a human being can also understand, your colleagues can understand. Okay, so that code can be understood by everyone. Let me give you an example. इंडिया में हम कोई भी रास्ता है, ड्राइव कौन से साइड से करते हैं? लेफ्ट साइड से करते हैं या राइट साइड से करते हैं? लेफ्ट साइड से करते हैं. इंडिया में कौन से? सर हम सिर्फ रास्ता देखते हैं, हम साइड नहीं देखते हैं. ऐसे लोग हैं. बट ओके, लेट्स गो टू यूएस में राइट साइड में करते हैं. कोई भी साइड. करेक्ट. इंडिया की बात मैंने गलत, माय बैड, माय रॉन्ग एग्जांपल. ओके, यूएस में कौन से साइड करते हैं? राइट साइड. ओके, नाउ माय पॉइंट इज, उससे क्या सॉल्व हुआ प्रॉब्लम? उससे प्रॉब्लम ये सॉल्व हुआ कि किसी का कंफ्यूजन नहीं है कि सामने वाला किधर से आने वाला है. राइट नाउ द सेम थिंग एप्लीकेबल इन द कोड एज वेल. आज अगर मैंने किसी सिस्टमेटिक वे में अगर कोड लिखा, किसी सिंपल तरीके से, इट्स अ वे टू राइट अ कोड, it's a guideline to write the code. If I have written a particular code in a particular way, then मैं कंपनी छोड़ के भी जाऊंगा ना, मेरा कोई रिप्लेसमेंट भी आएगा ना, उसको सिर्फ वो वे पता चाहिए कि कौन सा वे का कोड है. ये कंस्ट्रक्टर वाला वे है या एनकैप्सुलेशन वाला वे है या इनहेरिटेंस वाला, वो समझ गया ना तो उसको कोड भी समझ में आ जाएगा. गेटिंग? दैट्स व्हाई इट्स अ रूल्स एंड गाइडलाइन टू राइट योर कोड, your organized code, I would say. Okay, it can be used or loosed. Okay, lose it or use it. And Java provided this feature so that it will have the very well organized code, so that it's easy to understand everybody. You know, KT dena kitna difficult hai. Though all those guys are currently working, they already know that when like taking the KT from someone else, how difficult it is to understand कि भाई उसने क्या किया है, 2 साल किया है और वो मुझे 2 घंटे में बता रहा है. That is very difficult, right? But if there are certain guidelines that's followed, at least at the coding level, it will be easy to understand everybody. Okay, it will make your life simple, the similar way that we are driving our car, bike on the one side of the road. Okay, clear? ये है OOPS concept. Okay, now let's go with the simple basic OOPS concept, and that is constructors. So spend some time to read my screen. एक ही प्रोग्राम लिखने वाले 5 लाइन का बस. Spend some time. I hope you are reading. Okay, so let me read it. Constructor in Java is a special type of method. Okay, special type छोड़ो, but ये method है and we know method. हाँ, special type है मतलब कुछ उसके लिए different होगा, implementation या उसका behavior. यार but method पता है, constructor भी वैसे ही कुछ entity है that we can use. We know how to use method. Okay, that is used to initialize the object. Okay, INTI is equal to 10. ये है initialization. INTI only. Okay, ये है declaration. Initialization means see, object is also a variable. I is also a variable. INT सिर्फ बोलते हैं क्योंकि वो टाइप है. ऑब्जेक्ट का टाइप क्या होता है?
ऑब्जेक्ट का टाइप होता है क्लास का नाम, उस क्लास का वो वेरिएबल है ना। ओके, सिमिलर वे इंट ये टाइप है, उसका वेरिएबल क्या है I, उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। इनिशियलाइजेशन, वी आर असाइनिंग समथिंग, वी आर इनिशियलाइजिंग लाइक I इज इक्वल टू 0, इनिशियलाइजेशन। ओके, तो दैट इज समथिंग, वर्ड इनिशियलाइजेशन है, बट इट इज लाइक यू आर असाइनिंग समथिंग। ओके, ठीक है, ये मेथड है। Method is used to initialize the object. Okay, Java constructor is invoked at the time of object creation. Okay, we already created so many object in last couple of session. We created so many object in last couple of session. Does this mean that we already used the constructor concept? The answer is yes. आपको पता भी नहीं चला, आपने कंस्ट्रक्टर यूज भी कर लिया, और because it's a default behavior to create an object. The moment you, okay, the constructor is invoked at the time of object creation, मतलब इसका मीनिंग बताते, इन्वोक्ड वगैरह ये वर्ड थोड़ा सिंप्लीफाइड करता। ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो चुका होता है। अनिल, बट अपन ने कंस्ट्रक्टर यूज नहीं किया, अपन ने ऑब्जेक्ट बनाया, तो क्या हुआ? फिर भी कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट भी हो चुका था अनिल, आपने को समझा नहीं। ओके, ये समझना पड़ेगा कि हमने ऑब्जेक्ट बनाया तब कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट भी हुआ और हमें पता भी नहीं चला, हम तो मेथड ही देख रहे थे। ओके, तो ये क्या चीज है देखते हैं। इट कंस्ट्रक्ट द वैल्यू। ओके, ये उसका यूसेज है, दैट इज प्रोवाइड द डेटा फॉर द ऑब्जेक्ट, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज, ओके, इट्स कंस्ट्रक्ट द वैल्यू फॉर द ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट के लिए डेटा कंस्ट्रक्ट करता है, ये मुझे नहीं समझा, ओके, आपको भी नहीं समझा होगा। लेट्स पार्क दिस पॉइंट, अपन इस पॉइंट पे फिर से रिपीट आएंगे। कंस्ट्रक्टर, सिंपल पॉइंट देखते पहले, कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज क्लास नेम, ये बहुत अच्छे से समझा। क्लास का नाम जो है वो कंस्ट्रक्टर का नाम रहेगा, बट नाउ या कंपाइलेशन इश्यू नहीं आएगा क्या कि दो क्लास के नाम तो सेम नहीं दे पाते हम? तो कंस्ट्रक्टर इज अ पार्ट ऑफ कोड एंड इट्स अ मेथड, स्पेशल टाइप ऑफ मेथड। ओके, नेक्स्ट लाइन एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप, ठीक है, टाइप से उसके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसमें नहीं जाता मैं, मुझे पहले देखना है कि लाइन नंबर 1, 2 और 4, पॉइंट नंबर 1, 2 और 4, ये जो थोड़ा बहुत समझ रहे हैं ना, उसको मैं इंप्लीमेंट करने का ट्राई करता। ओके, एक सिंपल कोड से। ओके गाइज, वेलकम टू जावा, वेलकम टू उप्स कंसेप्ट। देखो मैंने क्या किया है, एक उप्स कंसेप्ट का फोल्डर बनाया है। ओके, द सिमिलर वे दैट यू क्रिएटेड फॉर द एक्सेस स्पेसिफायर, मैंने उप्स कंसेप्ट का बनाया है। अभी यहाँ बहुत सारे फोल्डर है, मैं आपके लिए एक माई कंस्ट्रक्टर का एक उप्स में, अरे अच्छा भाई, न्यू पैकेज उप्स कंसेप्ट्स डॉट माई कंस्ट्रक्टर वर्ड CTO कंस्ट्रक्टर बैच 24 ऐसा दिया। क्यों दिया ऐसा? ऑब्वियसली आई वांट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड कोड, माय कंस्ट्रक्टर बैच 24, बाकी बैचेस का कोड इसके अंदर ही है। ओके, बट वो अभी मैं एग्जांपल देने के लिए ये फोल्डर यूज करता। न्यू क्लास क्रिएट करना है, बोला है माय कंस्ट्रक्ट CTO कंस्ट्रक्टर क्लास, सिंपल, एकदम सिंपल एक क्लास बनाया। ओके, एंड फिनिश करता, मेन मेथड भी नहीं बनाया उसमें। लेट मी क्लोज ऑल अदर क्लासेस, एक ही क्लास लगता जस्ट। ओके, ये क्लास बनाया, उसने क्या बोला वो फॉलो करते हैं। कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड एट द टाइम ऑफ क्रिएशन छोड़ो, जो सिंपल कौन सा लगे, स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है, और कंस्ट्रक्टर नेम ऐसे मेथड बनाते हैं जिसका नाम सेम टू सेम क्लास नेम होगा। ओके, मेथड कैसे बनाते हैं, मेथड, और मुझे वो मेथड अभी मेथड 1 मेथड 2 ने बनानी है। पहले क्या बनाता था ऐसा, पब्लिक वॉइड मेथड ऐसा ये बनाता था, राइट? माय पॉइंट इज अभी हमें ऐसे मेथड बनानी है कि जो सेम नाम की हो। ओके, ये ब्रैकेट रहेंगे,
ओके, गेटिंग? ये भी निकाल दो। बहुत सिंपल, इससे सिंपल कंस्ट्रक्टर लिख नहीं सकते कि ये मेथड ही है। अनिल पब्लिक वगैरह क्या है उसने बोला नहीं कुछ, उसने सिर्फ बोला है वो पब्लिक वगैरह बाद में देखते हैं, बट ये स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है और उसका नाम ऐसा है। पहले तो ये चीज, ओके। सो इसके अंदर मेथड है ना, मेथड है तो उसके अंदर बिहेवियर भी होना चाहिए, बिहेवियर मतलब कोड होना चाहिए। सिस आउट, ओके, इन कंस्ट्रक्टर। टाइपिंग मिस्टेक में करेक्ट नहीं करता, लेट इट बी। क्लास नेम, method name is same as class name. No explicit return type, मतलब void वगैरह मुझे देना ही नहीं है, ओके। पब्लिक वगैरह मुझे कुछ देना नहीं, यहाँ पब्लिक दिया तो क्या होगा, ओके, चलेगा, ओके। बट मैं एकदम कोर लेवल से जा रहा हूँ, एकदम कोर, वो बाद में कर लेंगे, ओके। कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज यूर क्लास नेम। इतना मुझे पता चला, मैंने उतना किया, मेथड का सिंटैक्स डाला और उसका इम्प्लीमेंटेशन डाला। ये मेरा बेसिक हो गया, सेव किया प्रोग्राम। जावा कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, थोड़ा समझ नहीं आ रहा, बट मैं एक काम करता, इसका ऑब्जेक्ट बनाने का ट्राई करते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बनाने का, इस क्लास का। क्यों? क्योंकि मुझे, मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, दूसरा क्लास बनाया मैंने टेस्ट वाला जिसमें मेन मेथड है, ओके। obj class is equal to new, ओके ओके। अब क्या करें, उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करें, ओके। देखते हैं, कॉल करने का ट्राई करते हैं। यहाँ मेथड कॉल करते थे, वो कंस्ट्रक्टर तो आ ही नहीं रहा, ओके, कंस्ट्रक्टर आ नहीं रहा। यहाँ मेथड लिखी होती तो वो आ जाती, यहाँ एक मेथड लिखी होगी ना, वो देखते हैं, वो भी लिख ले क्या, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज। इसको मेथड को रिटर्न टाइप कंपलसरी है, ओके। और ये इसका एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा है गाइज, इसका एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा है, मैंने कुछ नहीं, डिफॉल्ट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ओके। सो ऐसे क्वेश्चन आपको आते रहेंगे। ये मेथड यहाँ से एक्सेस होती है टेस्ट में, obj class dot, ओके। सो ये मेथड एक्सेस हो रही है, बट वो मेथड एक्सेस नहीं हो रही है जो स्पेशल टाइप की मेथड है। और उधर लिखा है कि एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन, यही तो लाइन इनिशियलाइजेशन है, यही लाइन है इनिशियलाइजेशन, लेट मी रन इट। ये लाइन तो इनिशियलाइजेशन तो वही है, कैन यू सी दैट इन कंस्ट्रक्टर, मतलब ये कोड एग्जीक्यूट हो गया, ये डिलीट कर देता है, ये इसका कोई लेना देना। इन कंस्ट्रक्टर वाला कोड एग्जीक्यूट हो गया इवन विदाउट कॉलिंग इट, मैंने कॉल भी नहीं किया और वो एग्जीक्यूट भी हो गया। व्हेन आई से आई हैवंट कॉल्ड मींस मैंने वो obj डॉट मेथड नेम ऐसा कुछ लिखते हैं अपन तो कॉल होता है, वो किया ही नहीं। दैट इज व्हाट द कंस्ट्रक्टर इज ऑल अबाउट, इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। जो ओके अनिल, आई वांट टू कॉल इट वन मोर टाइम, इंटरेस्टिंग। आपको सिर्फ क्या करना है, ऑब्जेक्ट का नाम अलग देना है, सेव, 2 बार आ गया, ओके। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, दैट्स व्हाट द बेसिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। अपन ने सिर्फ ये 2 चीजें देखी कि अनिल, अभी मुझे एक सिंपल क्वेश्चन है, मैं आगे का बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने आगे का पढ़ा है नहीं, एंड आई वांट यू गाइस टू just concentrate on basic thing first. Advanced concept, those are coming, not maybe today, but tomorrow those are coming with us by 8:30. Anil, last time हमने तो ऐसा कुछ लिखा नहीं था, when we wrote a basic access specifier, for example, ये ले लेते टेस्ट वाला कोड, वो सी पैकेज में था ना, इतने सारे हो गए हैं।
मैं प्रोटेक्टेड का है. ओके ये नहीं, 24 वाला टेस्ट. Anil, we have written this as well, but this time my class यहाँ वो स्पेशल टाइप की मेथड तो लिखी नहीं, ये कैसे चला? वैलिड क्वेश्चन. We don't have any answer. We will get this answer tomorrow. वैलिड क्वेश्चन एकदम कि यहाँ तो लिखा भी नहीं था. उस टाइम क्या हुआ, वो क्यों रन हो गया, एरर क्यों नहीं दी? वैलिड क्वेश्चन. बट इसका आंसर मैं आज नहीं दूंगा, कल स्टेप बाय स्टेप जाते. आज आपको एक ही कंसेप्ट याद रखना है. ऑब्जेक्ट जब भी इनिशियलाइज होगा, आपका कंस्ट्रक्टर पूरा के पूरा, या आप 100 लाइन का कोड लिख लो, इट विल बी एग्जीक्यूटेड. तो आपके पास और एक क्वेश्चन होगा कि एक काम करते हैं, सारा कोड कंस्ट्रक्टर में लिखते हैं, ये मेथड लिखने का ही क्यों? ओके, कंस्ट्रक्टर आर डिजाइन टू कंस्ट्रक्ट द वैल्यूज. वो कल पढ़ेंगे अपन. बट क्यों क्यों मैं तो मुझे कोड ही लिखना है उसमें. अरे नहीं बाबा, जावा बोलता है इसमें लिख, क्योंकि तू कंपनी छोड़ के भी जाएगा, देन इवन द नेक्स्ट गाय कैन अंडरस्टैंड ये कोड किस लिए लिखा है. ओके, दैट्स अ रूल. आई सेड use it or lose it. If you don't want to use method, you want to write everything in constructor, you can write, but that's not the ideal way which is supposed to be done. Okay, you can write, I said, like you can write all the code of millions of lines in one class, but that is not something going to work for the longer time. So constructor आज का concept ये की है, we constructor getting executed the moment this line execute, the moment this line execute. फिर से रन कर रहा. आज का वही आपका अंडरस्टैंडिंग है. इसके बाद अपने को स्टैटिक वर्ड भी देखना है. इस ये होने के बाद, आज नहीं, स्टैटिक वर्ड would be the first concept for tomorrow. Okay, so guys, any doubt over here? We just tried, we learn this, only this and only this. 2 लाइन आज पढ़े क्योंकि I don't want to overburden with all this concept in single program. Let's write the simple code first and let's enhance this code tomorrow with other concept of constructor. All good? ठीक है, सिंपल रखा आज के लिए, just to avoid the confusion. इसको enhance करेंगे कोड को. ओके, एनहांस करेंगे. आई डोंट थिंक दैट कि भाई कंस्ट्रक्टर बहुत डिफिकल्ट है या बहुत सिंपल है. ओके, it is necessary to give different object name. हाँ, एक क्लास में 2 नाम, एक क्लास में 2 वेरिएबल के नेम सेम नहीं हो सकते. int i10 int i20 नहीं हो सकता. ओके, वैसे ही ऑब्जेक्ट के नाम भी सेम नहीं हो सकते क्योंकि उनका भी टाइप है ना, क्लास है. आप देखे देखो. ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर देखो, ये 2 बार ऑब्जेक्ट किया सॉरी 2 बार ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. दैट्स व्हाई आई एम सी द execution 2 times. Guys, someone is at my door. Just give me a moment.
sorry. ठीक है? All good? Do not miss tomorrow's class. Can we call object in the same class? Okay, I'm just trying to understand. Can we call object in the same? हाँ हाँ कर सकते हैं उसी क्लास में. मेन इस क्लास में फिर से एक मेन मेथड बना दो, फिर इसमें एक मेन मेथड बना दो और खुद के क्लास में मेन मेथड में खुद का यही मेन मेथड वैसे ही उधर लिखो इसमें, तो भी चलेगा, तो भी चलेगा. मतलब एक ही क्लास में अपन ट्राई कर रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेट करने का, चलेगा वैसा भी. ये मेन मेथड इस क्लास में लिख दो खुद के क्लास में, तो भी चलेगा. Shall I do that? If you want, I can do that as well. Guys, I'm not going to cover any more same object name give duplicate look. Correct. मैं वही बोल रहा था कि it's like a variable. Object मतलब it's a variable and आप दो नाम के variable दो variable का नाम same नहीं रख सकते. That's what like and that's fine as well. Like how the same how we can identify a particular variable, and that's why Java decided not to have the duplicate variable name. ठीक है. So Jayesh, I hope you are understanding very basic concept. Yes, sir. Okay. So even I would like to talk to you after the class. Okay. Please stay on Yes, the I call. will call you. Okay. Yeah, stay on the call. Maybe we can quickly sync up. Yes. Guys, आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना जावा में, इवन ऑटोमेशन में, जो मैंने मेरे करियर में भी फेस नहीं किए हैं. ओके, दैट्स फाइन, क्योंकि जावा या ऑटोमेशन या इंडस्ट्री, ओपन इंडस्ट्री, राइट, सब कुछ इतना बड़ा, इतना नॉलेज है. तो we'll try to find out the answer if we don't know. Okay. That's okay. So as I said, like I'm not going to cover any more new concept. We will be starting, since we know constructor, we will be starting with static variable, which we left in tomorrow's session. Okay, so don't miss that. That is something a very important concept. And then we will again move to constructor part. We will try to understand different types of constructor. Then different types is there, default constructor option is there, and then its usage, how to use, practically how to use the constructor. Okay, and if you are done with the code, you can drop off. Okay, Mahesh living, can we take more example of constructor tomorrow? Yes, 4-5 program होने वाले, Saurabh. Okay.
ये तो अपन ने जस्ट अभी स्टार्ट किया ना, तो आज और एक कंसेप्ट लेता ना तो फिर कंफ्यूजन भी होता और 12 बज जाते। ओके अर्चना, बाय बाय। थैंक यू सुरभि, थैंक यू विक्रांत, थैंक यू प्रत्यम, बाय बाय प्रसाद, गुड नाइट, या सी यू टुमारो, बाय बाय श्रुति, बाय अंजू, बाय सुप्रिया। So Jayesh, Yes, sir. okay, so now do you have Java setup? You told like you have Java setup. Yes. Okay, so have you attended the recording? Yes. Yes. Okay, And so you I are have written same code as well. code as well. Perfect, man. So and even you are understood today's session as well, like at least basic thing. Yes. Yes. You wrote today's code. Yes. अरे बढ़िया. So now I think you are all set, right? Yes. ओके ठीक है, चलेगा। फिर मुझे वही पूछना था यार कि डिस्कनेक्ट तो नहीं फील कर रहे हो, एंड डोंट हेजिटेट टू आस्क द क्वेश्चन जयेश। वी आर गोइंग टू वर्क एज अ टीम, विल ट्राई टू सी एज मेनी concept as possible, and whenever you have any doubt you can even ask in WhatsApp group as well, ठीक है? सर वो आप रिटर्न नोट्स नहीं देते क्या? रिटर्न नोट्स क्योंकि बाद में रिवाइज नहीं, करना होगा। हाँ करेक्ट। एक अभी तो रिकॉर्डिंग है, मैंने एक्चुअली लास्ट सेशन के सारे कोड शेयर भी कर दिए, मैं आपसे फिर से शेयर करता कोड, ओके? और स्लाइड्स भी शेयर हो जाएंगे ग्रुप पे, सब कुछ शेयर हो जाएगा। ये मैंने जो कोड लिखा है आज का भी आ जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज वेरी इजी फॉर मी टू ट्रांसफर द कोड। तो मैं आज का कोड और इससे पहले वाला कोड जो ऑलरेडी ग्रुप पे है बट यू ज्वाइन लिटिल लेट ना, यस। हाँ, तो वो कोड भी आपको फिर से फॉरवर्ड करता है और आज का कोड भी शेयर हो जाएगा, ठीक है? और स्लाइड्स भी, ये जो मैं दिखा रहा हूँ सब कुछ कोड सब कुछ शेयर होगा, ओके ठीक है? हाँ। Okay. If you are done with the code, then maybe you can also drop off. So Lalita, Surbi. Okay, sir. Thank you. Okay, chalo Jayesh, bye bye. See you tomorrow. Lalita, Bye. Surbi. If you are done, then maybe we can close the call. Chalega, Lalita? Yes. Lalita, do you have any doubt, question? No, but I have done that code, default specifier. डिफॉल्ट स्पेसिफायर हो गया? Yes. ओके, तो आपको मुझे दिखाना है तो आप अभी भी दिखा सकती, कोई बात नहीं। 1 second. शेयर कर रही है कोड? Just 1 second. आवाज, आपका आवाज है ना एकदम Hello? क्लियर नहीं आ रहा। हेलो? Yeah. हाँ, अभी अभी आ रहा है? एकदम क्लियर, अभी बहुत क्लियर है। हाँ, आई वुड लाइक टू सी योर कोड। मैं स्टॉप किया स्क्रीन शेयर। यू आर द ओनली प्रेजेंट इन द ग्रुप नाउ, बाकी लोगों ने ओके। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ओके। Default. एक मिनट, वो पहले 2 एरो क्लिक करो, वो 2 एरो क्लिक करो, करेक्ट। और एक हमेशा ऑन रखना। अभी देखो कहाँ है आपका कोड, राइट में जो कोड है ना वो उसमें। सिलेक्ट हो गया है, लेफ्ट में सिलेक्ट हो गया। अच्छा कोड लिखा है आपने बाय द वे। सी, तीन सेशन हो गया और अपने पास कितना कोड हो गया देखा? Yes. और इमेजिन करो 3 महीने होने। दैट्स गुड ना? Yes. करेक्ट, यही प्रैक्टिस है एक्चुअली, जॉब के लिए यही चाहिए होता है। ओके हाँ, मुझे क्या दिखाना था आपको? I डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर। नहीं, क्लास का था वो। कहाँ? दिखाओ हाँ, कोई भी, यहाँ पे है। ठीक है। हाँ, ये वाला।
इसका मेन क्लास का है. ओके, माय टेस्ट प्राइवेट. This is the main class ओके, with the default access specifier. हाँ रुको रुको रुको, ये टेस्ट वाला है और इसका मेन क्लास का है इम्पो. ओके, आई डिफॉल्ट. ओके, फिर से दिखाओ टेस्ट वाला क्लास. इन डिफॉल्ट रन करो. चल रहा है, सही तो कोड लिखा है. हाँ सही है, वही मैं बोल रही थी कि मैंने कंप्लीट डिफॉल्ट कंप्लीट नेम. हाँ हाँ, और प्रोटेक्टेड का प्रोटेक्टेड का यहाँ भी, पे. वो भी दिखाओ मुझे. हाँ प्रोटेक्टेड वो एक्चुअली इसमें हाँ, नहीं हो रहा है. नहीं उसमें Different होना भी नहीं access चाहिए, specifier. उसमें एरर ही रहेगा. करेक्ट. हाँ, बट बहुत अच्छा कोड लिखा है, मतलब सिस्टमेटिक कोड लिखा है. आई एम वेरी हैप्पी. इंटीजर को भी कर दो ना प्रोटेक्टेड, उस इंटीजर को भी कर दो ना प्रोटेक्टेड. हाँ करेक्ट. तो कैसे है, समझने के लिए इजी रहेगा, बाद में रेफर करेंगे तो. ओके. प्रोटेक्टेड. ओके, और इसका टेस्ट क्लास दिखाओ, नीचे वाला, उसके जस्ट नीचे है लेफ्ट साइड पे. हाँ तो वो भी ठीक है. या वेरिएबल को भी कॉल कर लेना बाद में ओके. नीचे ऑब्जेक्ट, और उसको प्रिंट कर लेना. ठीक है. ठीक है. ठीक है. ओके, ऑल गुड. और कुछ नहीं, उतना ही समझ था. में आ रहा है? हाँ आ ओके. रहा है. हाँ अभी तो मतलब मैं तो बोलता इतना कोड लिखा है तो समझ में ही आ रहा है. आई एम अज्यूमिंग. हाँ आ रहा है समझ में. आ रहा है ना? क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग ये ऊप्स कंसेप्ट की, तो ठीक मुझे है, ज्यादा ठीक है. पता नहीं ऊप्स कंसेप्ट का. दैट्स फाइन, दैट्स फाइन. अरे इतना कोड आ गया ना तो ऊप्स कंसेप्ट इससे सिंपल है, इससे हाँ सिंपल बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, हम जब ये सीख रहे हैं कंस्ट्रक्टर, एक्सेस स्पेसिफायर और ये, बट वो अभी मैं बहुत दूर का सोच रही हूँ कि वो कोड में कैसे, मतलब पूरा समझ में कैसे आएगा कि मुझे यहाँ पे ये एक्सेस स्पेसिफायर यूज करना है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज करना है. उसके लिए एक्सपीरियंस लगेगा, और वो एक्सपीरियंस जब तक बैच अपना नहीं होगा ना तब तक वो अपने को आएगा नहीं. राइट. फर्स्ट टाइम कर रही है आप तो उसके लिए टाइम लगेगा. तो अल्टीमेटली टाइम विल डिसाइड द. करेक्ट. और टाइम विल डिसाइड. आपको टाइम ही आपके कुछ क्वेश्चन का आंसर देगा. इवन मैं भी नहीं दे पाऊंगा आज. ओके. बट टाइम के हिसाब से अपन नॉलेज बढ़ते जाएगा ना, तो उसके हिसाब से आप रिलेट कर पाओगे कि यहाँ क्या यूज करना चाहिए. ओके. ठीक है. ओके. थैंक यू. ओके, चलेगा. फिर अभी कोई है क्या ग्रुप में? कोई नहीं, चलो अपन दोनों ही है. चलो बाय बाय देन. ओके, थैंक यू. चलो बाय बाय.